This conference will now be recorded. All right. Thank you so much, everyone, for joining this session. This is part two of understanding microservice, how to build big applications like Netflix and Amazon using a network layer architecture. I'm your trainer coach, Professor Ajit Vishwakarma, welcoming all the proud students, all the Bahadur students who have joined this session here with us on day two. Right? Okay. Consistency is important, guys. So those who have joined on day two are somebody who is serious about their career and are looking forward to learn these technologies, and I appreciate those who have joined again. All right. Okay. So we were talking about microservices. We also discussed in a great deal how the traditional way in which we build software versus the microservice way. Right? There is a lot of challenge in the traditional way. This will not give you quality. Okay, after a period of time quality will degrade. Here it will give you quality. This takes a lot of time to build. This saves your time. This also saves your cost. This also helps you to work in smaller teams, and it adapts to all kind of changes. That means you can build more and more features easily. So this is a network layered based architecture which helps us to achieve one of the most important one of the most important requirement of my industry, that is quality. Right, my industry wants quality, and my industry wants quality, my industry wants time, my industry wants less cost. Again, my industry wants small team size, my industry wants software should adapt to change. Okay, q t c and tc, also sometimes I call it as q is equals to tc square. All right, this is what my industry wants. Now, in order to build a microservice based architecture, right, we are using 4 to 5 different components. So we'll talk about the architecture. Now, here what will happen is, instead of making one big application, we will make small applications. Each application is called as one microservice, and one microservice is basically to perform one job only. So here we also have client. This is a network based architecture. That means it will work on servers. When this is working on servers, user can send requests using browser. Right, user can send requests using browser. Now this request is basically handled by something called as API gateway. Whatever request that user will send will be first understood by API gateway. API gateway will forward it to the required microservice. Right, these microservices are very smart, neat and nicely designed. Each microservice can have its own technology. That means this you can make in Java, this you can make in PHP. Each microservice has its own database. That is very important. Isolation. Okay. Now it will communicate with these microservices. These microservices can communicate with each other when and where required, and then process the request, and then request is sent to API gateway. Whatever it has got, it will send it back to the client. All of these things are happening on servers, network based. Now here there are two additional things that we have come up with: service discovery. So many different types of microservices, thousands and thousands of microservices. It might become impossible for us to keep a track of where and which microservice is running on which server. So service discovery has got service registry. छोटा सा registry रहता है उसके पास, which will keep a track of which microservice is where. Okay, done. Certain optional features are identity provider. Request कौन भेज रहा है? I need to check. How will I check it? By simply some username, password, or some kind of a token. Right? Only a valid user can send the request. Right?
Another optional services is, suppose in terms of microservices used for YouTube or Netflix, where request is in form of a video stream. So there what we do here is, whatever the video is, instead of giving it directly from any server, we try to send it from the server which is nearest to you, right? So that you get the response very fast. This is the architecture, right? Small collection of small services working independently, making a big enterprise level software or an application. Now, yesterday we worked on a lab work. Lab work number one, we created a user, we created a contact, right? These are the two services we created. Contact had some details, user had some details. Okay. And then these two things were communicating with each other. We did not implement API, we did not implement servers because the API is not yet been built. So the client is directly talking to the service because there is no API as of now. We will make it. Okay. First, they were talking to, the client was able to communicate with user service. It was able to fetch the user. Wonderful, good. It was also able to communicate with contact, and then contact gave you the contact. But the user was not able to get user with contact. So we made some changes and user started communicating with contact service. What changes we did? We use something called as REST template. How can two application on internet can talk to each other directly? See, you are talking fine. You are talking through HTTP protocol. How are they, these two talking with each other? These two can talk with each other using REST template. Okay. We have used Java Spring Boot, which is an excellent framework for building up microservices like this. Okay. Some of the assumptions we have taken. Number one assumptions we have taken here is, we have not attached a database. We have hard coded the database, but you can very well do it. Another assumption is, both our programs were in Java, right? But you can very well create second program in any other programming language because it is irrelevant which programming language it is. REST HTTP template is simply send you an ID. That's it. This is also called as data coupling. That data is shared between two modules. Data coupling. Code is not shared. This is one of the best type of coupling. There are four important concepts of building any software or designing any software: coupling, cohesion, layering, and modularity, which we cover in software engineering. Okay, if you want to know more, please wait for software engineering training program where we'll cover up these things. So one of the type is data coupling. That means only data is shared. This is one of the best way to build a software, right? And there are many more things. Best to worst case scenarios, we have all of the scenarios. So that's wonderful. That's what we did. Okay, I'll do a quick recap about the code that we have created yesterday, and thereafter we will take all the doubts. Am I audible, guys? Is the audio proper today? Hmm? Yeah. So I hope the audio is loud enough. I by default shout a lot, right? I have got big bass, but still, if there is any kind of technical glitch, right? What I did today was I had installed another microphone and I did a lot of other things for you because yesterday one person was telling sir audio is not proper, right? So I got some more mics and another additional cameras for you. Okay, all right, sure. This is what we implement, and and yeah. So what we did was Spring Boot. We went to Spring Boot initializer.
Right? We went to Spring Boot initializer. Here we first try to create my user microservice. Okay. So what we did, what we did some changes. Language is Java. Type of project is. Can anybody tell me which is the type of project? Maven. 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 Why do we use Maven? Why do we use Maven? Because it supports POM, project object model, right? That's a smarter way of creating projects and managing projects. Okay, this will go default. Here we created user, then we created user, we gave a description, package name, we renamed the package name to form.user. This was just like this in the dependency because this is a web application. So we added Spring Web. All right. And then we generated it. Same thing we did for contact also. Contact, com.contact package. We generated two things. Then we opened up these things using our Eclipse IDE. Eclipse IDE is one of the very good IDEs when you are working with Java in Spring Boot. Also, it was recommended that you go to help, Eclipse Marketplace, and install Spring Boot, Spring Tool 4, which gives you more support of Spring. Because by default, Spring support is not there with Eclipse. That also we did. Spring Tool. Here, this one. Spring Tool 4 is something we added. So this will help us make Spring projects easy. That's why we wanted. All right, this was done. Then we went ahead, file open project. Right from here, what we did was we have downloaded the project from here. This we have generated. This will give you a zip file. Now that zip file we had put up in our working directory, extracted it, and then we try to select and open this project. This was step number one. Once you do it, ये project यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. इसके बाद में we try to implement something called as MVC architecture. MVC architecture क्या है? Again, कोड को different three layers में बांटने का काम. Here we are layering the code. All of these things are together, but in a layer. Like it's like a sandwich. Okay, सब एक साथ ही रहेगा, but एक layer में रहेगा. पहले एक ही रहता था. अब अलग अलग लेयर में करेंगे. Why do we need to do it? More neat way of coding it, more easy to, if there is some problem in your logic, so it is easy to go into logic and change it. There's some problem in your design, it's easy to go to your design and see it. कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है तो कंट्रोलर में जाके देख कर अपने सॉल्व करना इजी हो जाता है. दिस इज अ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट. ओके, when you are working on designing a software, there are 4 levels you should take care of. सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के 4 लेवल्स रहते हैं कभी. नंबर 1, data design, architect design. This is a part of architectural design. UX or UI design, and finally we have component design. आर्किटेक्चरल डिजाइन इज मैं अपना पूरा सिस्टम बनाऊंगा कैसे, किस आर्किटेक्चर पे बनाऊंगा. ओके, डेटा डिजाइन हैज एवरीथिंग टू डू विद डेटाबेस. आर्किटेक्चर डिजाइन, मैं ये सिस्टम कैसे बनाने वाला हूँ. देयर आर मेनी डिफरेंट
architectures that are available: MVC, HMVC, MVVC, right? Model view controller, many things are there. Now each one is beneficial for different types of projects. आपको क्लासिफाई करना होगा किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए. It's just like suppose you step out of your home, so you decide, right, which mode of transport you'll use. It's not that if you have to go to, if you just have to go to a grocery store near your home, you will take out your car. You won't, right? Yeah. Or you have to travel to another city, so you'll go by cycle. You will not, right? You have to choose a proper mode of transport. So here, a proper mode of architecture you have to use. Now that what different types of architectures are there which to use when is something you have to study. MVC architecture. तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेपरेट पैकेज थे. एंटिटी, हमने एंटिटी बनाया, फिर हमने सर्विस बनाया, और फिर हमने कंट्रोलर बनाया. Done. Now my entity will have my class. इसमें सिर्फ मेरा क्लास रहेगा बस. So I will make my user class here. User class, all my constructors, all my getter and setter. That's it. That's it. This job done. Then I will create my service. In my service, I will create my interface and implement my interface. Here I will also put my data. मैं मेरा डेटाबेस भी यहाँ implement जहाँ करूँगा वहाँ पे डालूँ. ठीक है. और इसमें क्या है, यूजर लाना है, बस इसका काम है. कंट्रोलर इज बेसिकली व्हेन यू फायर फ्रॉम द यूआरएल पे जब आप जाओगे, आपका क्लाइंट क्या यूआरएल यूज करके ये सर्विस को एक्सेस कर पाएगा. दैट्स व्हाट कंट्रोलर विल डिसाइड. सो इट सेज स्लैश यूजर. Unless and until you don't type slash user, you will not be able to hit this service. इसके अलावा if you put anything, this software will not work. Controller हमने सेट किया, right? This is what we did. 1 2 3. We also did something very important, that is we changed the port, server.port. हमने application का port number change कर लिया because we all are गरीब, we don't have servers. So we did some jugaad and we changed the port instead of changing the servers. Okay, but then there is an upcoming training program where we will work with multiple servers, including AWS and other things. So those who have no idea how server works, have never seen a server, how to host websites, etc., you should join that training program. Done. This is what we did. Cut to replica. Similarly, we designed contact service. ऐसे यूजर सर्विस बना दिया, सेम वे वी डिजाइन contact service, right? Once that was done, I was able to fetch user, I was able to fetch contact, right? This was done. Two independent softwares, but this user was not able to get contacts. So what we did was we went ahead in my user and इसके controller में हमने REST template use किया. और क्या किया, using REST template, from here I was directly hitting through browser to browser, right? Browser to browser, ये इस URL को कनेक्ट किया इसके कंट्रोलर को, और यहाँ से कॉन्टैक्ट लेकर के यहाँ ले आया. ये हमने लास्ट में थर्ड चेंज किया था. दिस वाज व्हाट वी डिड. Cool. Any doubts? This was what we implemented yesterday. I'll quickly show you the code, then we'll take the routes. First we made entity. Entity में we made user. Allow it some time, guys. So many application system might tend to work a little slow.
First we made user. User में we took some of the fields, ID, name, phone, and user will always have a contact. Contact, user may or may not have contact, but contact will always belongs to a user. Okay, so this we created three constructor. Number one constructor with contact, another constructor without contact. ऐसा हो सकता है कि कुछ यूजर का कांटेक्ट नहीं है, हो भी सकता है. Sweet enough. Default constructor, getter and setter. Then we created the contact class. Contact class, हमने contact class create कर दिया. Then we went ahead and created the user service interface जो get user करता है आपके लिए. फिर हमने इसको implement किया. Implementation के टाइम पे we created one service. At the rate service automation is important. उससे पता चलता है कि एक सर्विस है. ठीक है, और हमने एक फिल्टर अप्लाई किया यहाँ पे. पूरा का पूरा यूजर मत भेजो भाई, जिसका आइडिया आता है वही यूजर भेजो. We did this, and we also try to learn something new, which is called as yet another markup language. बहुत important है, इंडस्ट्री में बहुत यूजर है. YAML. We try to use that also. Using that, we change the server port. Then this all things we did. Cut to, we created the same thing for contact. Same exact thing for contact. Only thing is it was for contact class. And in order to make both of them communicate with each other, what we did? Two things we did. Number one, इस एप्लीकेशन में हमने एनेबल किया क्या, रेस्ट टेम्पलेट हमने एनेबल किया. We enable REST template. Number two, we went to the controller, which was earlier only returning users. Earlier सिर्फ user return कर रहा था. Then we use REST template and we ask the controller to contact the controller of the contact service. फिर हमने क्या किया, ये जरूरत नहीं है, इस सबको निकाल दो. फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने one line of extra code डाला बस. We said, my dear REST template, can you go to contact service which is there running on some other server. इस सर्वर पे जाओ, कॉन्टैक्ट सर्विस को रिक्वेस्ट करो कि भाई डियर कॉन्टैक्ट सर्विस, ये यूजर आईडी के कॉन्टैक्ट्स निकाल के दे दो, ये यूजर आईडी का कॉन्टैक्ट निकाल के दे दो. तो ये यूजर एग्जिस्ट करता है तो दो, नहीं दे रहा है तो नल वैल्यू रिटर्न करो. तो वहां पे गया, वो कॉन्टैक्ट किया यूजर सर्विस को, एंड वहां से इट गॉट मी अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. दिस कॉन्टैक्ट I added with my user and then I returned my user. So these two extra line I have added. How things works through REST template, browser to browser communication for. यहाँ पे अभी मैं फीचर स्कोप में बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ. I can also ask for a token if I request सिर्फ genuine जगह से आनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे अपना सीक्रेट पासवर्ड भी बताना पड़ेगा. ओके, अगर मैं ऐसा इम्प्लीमेंट करता हूँ तो. This was what we did. Now what I'll do here is, anyone who was not able to do it for any reason, you can share your screen. I'll solve all your doubt. Yeah. Can you share these files for REST templates? Yes, I will. I will. Okay. So what I'll do here is, these two files are there, right?
and I'll put this in the group. Both the things I'll put it in the group. Just allow me 30 seconds or so. If you only and only want specifically the controller, so I'll send you that also. Form dot, this is number one file. Just allow me a minute. Allow me a minute, guys. System do tend to stuck up when you're working with such big tools. Files are gonna come in a minute. First code given, uploaded in the drive in the group. Second one, uploaded in the group. Okay, but I have made some changes here, right? Please check in your groups. SRC. Done. This is my step 3. Okay. 3 parts of the application shared in your group. Done. Received. Now, if any of you have any doubts or your application is simply not working for any damn reason, you can share your screen. I'll help you. Even if you say, sir, I want help from step number 1. Yes, guys. Anyone who require help, any error, any bug, application not running,
for any damn reason. Even if you say step number 1 से सर नहीं चल रहा है, I'll help you. All you need to do is just share your screen. That's it. Mhm. Sure, no doubts. Well, I'm pretty sure many of you might not be able to work this out. I'm pretty sure some of you have errors or problems. You know, you want me to run the code for you? I will. I will run the code for you. As you ask me, this is a working project. You can put it on your resumes. Yeah, this might actually fetch you a meaningful job. All right. Very simple thing to do. Right click. This is my contact service. So I'll first run my contact service, not my user service, because my user service always requires contact service running. Yeah, always check at the console. Yeah, the console says Tomcat initialized at port 8002, successfully running contact service application. Sweet enough. Come here. Localhost colon 8002 slash contacts slash user. Sir, why only slash user slash contact? Because we had set this thing up in the controller. Am I right? Come here. Yeah. See, slash contact slash user, and then it will accept user ID. Slash user ID. See, my user is there. Correct? Now you can add HTML to it. You can add beautiful HTML to it and maybe present this beautifully here. You can add HTML, you can add nice database. You guys can do all of those things to make this look more aesthetic and more beautiful. Contact service. My contact is working. Now what had happened here is through my browser, I'm connecting to contact. Now let's do through the browser connect to user. For that, I'll have to run my user service. Right click run. Please make sure that the contact service is also running in the background. Here, already started working. That's good enough. However, something that is troubling me is the dependency is still getting attached. This is possibly of my internet issue, but that is all right. We'll ignore it for now. I'll open up another piece of browser. Let's open a new browser. Second application. Localhost 8001 slash user slash. Then you have to put some user ID here.
This is my user, and contacts, this is my contact. Now what's happening here, my dear friends, is I'll tell you what's happening, the magic. This contact service is running on different server altogether, different port number. This is running at a different port altogether. These two are independent softwares with independent code, independent database, nowhere connected with each other. So what's happening is my user service controller is firing a request to the controller of my contact service. अभी here use your imagination. यहाँ से वो इंटरनली रिक्वेस्ट भेज रहा है, हमने कोड में लिखा है कि भाई इधर जाओ, इधर लेकर जाओ. ठीक है, कैसे हमने इसके कोड में लिख दिया था, क्या लिख दिया था, लोकल होस्ट :8002 स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश यूजर स्लैश ये यूजर आईडी जो भी मैं भेजूं, तो ये यहाँ जाता है, वो ये डेटा रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट मिल जाता है उसको, एंड देन दैट डेटा, सेम डेटा इट इज प्रिंटिंग हियर. सी, this data is not existing in this application, neither the code for contact. It is getting it from a different server altogether. Now contact application आप PHP में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी बना लो. Alright, understood? Done? Any doubts? Guys, you are allowed to share your screen, and if you are stuck somewhere, you can just ask. Otherwise, we'll continue and we'll go further with next part of the demonstration. Are you feeling scared? Should I share my screen or not? Yeah, absolutely from zero also you can ask me. एकदम सर माइक्रो सर्विस क्या है, हम कहाँ आ गए सर, you can ask me everything. Right, but don't skip this. Shall I give you some time to work on it while you are working in the background, which I think you are working? Code and everything I have already shared. So let me wait for 5 minutes. Is it all right? Code and everything I have shared it with you. I hope you have received it. I'll give you 5 minutes of timer. You can directly use my code also. There is no problem. Or you can do it from scratch also. There is no problem. You know, just refer my code. All right, done. Just take some time, work it on your own, and then I'll proceed with the next step. If somebody is still not able to do it, there is some error that have come up, please guys share your screen. I'll help you. Thank you. 5 minutes. Please work on the code. At any given point of time, you feel you are stuck or you are facing some errors, just share your screen. I'll help you. Thank you. This conference will now be recorded. Thank you so much. So we just finished up the doubt session where all of the students have shared their screen, and I personally went and solved all the errors. Right, and now everybody is on the same page.
All right, guys. Thank you so much. If you still have doubt, I'll give you some more time at the end of today's session. Plus, that group is there. You can ask me doubts later on also. Okay, but then I totally encourage you to ask doubts and questions as much as possible. Now, what I'm gonna do here next is I'm gonna create the service discovery. Okay, the name itself is called as service discovery. नाम में ही मतलब छुपा है. सर्विस कहाँ पे किधर रन हो रही है उसको फाइंड आउट करना. सर्विस डिस्कवरी. Okay, so I'm gonna create it. It's a type of a server. Again, Java Maven 3.2, and what we'll do here is Java Maven 3.2. Okay, e server. This is a service discovery for KCK. Done. Done. Have a look. Have a look. Okay. Now, is it a type of a web application? Is it a type of a web application? Yes or no? Yes or no? Is it a type of a web application? No, it is not. It is not. It's a type of a server. So what we'll do here is we will include a dependency which is called as okay, here. Here, can you read this? Eruka server, Spring Cloud Discovery, Spring Cloud Netflix, Eruka server. Now this is the dependency which creates this and makes it a service discovery server. This is not a web application. This is a service discovery. Save. Done. Clear. It's not a web application. It's not an application. It's a server. So I have to add this dependency. So there is something called as Eruka server, which is there in Spring Boot. Spring Boot के अंदर है भाई पहले से. Spring Boot framework है ना. Half of the things are already there. Half of the things are already there which can be used. Done. Is this set and done? Okay. Let me take a screenshot for all of you. I'll share these screenshots on your groups. E-server. Okay, let me share it on the group. Done. Shared. Click on generate. Generate clicked. Go to download. Go to download. Cut this thing. Go to your working directory, which is here. Paste it. Right click it and extract here. Please remember you always have to do extract here.
Done. Delete this. Not required. E server. Done. Let me know when you have reached this step. Just let me know when you are done. I'm also adding screenshot from yesterday's session. Yes, I'm sharing these files. So we had created a DevOps microservices group. I hope you are a part of it. Yeah. So because this is just the beginning of microservice and DevOps, we'll be having a lot of follow-up sessions. So what we have done here is we have created a group where we will be posting everything. Yeah, we'll be posting everything. Yes. All right. Next step, very simple and very easy. File, open, directory. Go to the directory where you have extracted it. Hmm, here it is. So if you have not attended yesterday's session, there is no problem. Today we did the complete recap from beginning. एकदम zero से हमने recap किया, कोई problem नहीं है. You can join the session, and I will also give you the recording of yesterday's session. I'll give you recording of yesterday's session also. Okay, if somebody has recording for yesterday's session, uh, can you post it in the group? Yeah, it's there. I'll repost it for you. Plus, we did it from scratch. We did it from scratch. All right. Don't worry. Do it today. Or at least today you do it. Select eServer. Open the folder. eServer. Finish. Now, eServer might take little bit time for this to get included. It might take a little bit more time for it to get included. Yeah, kindly allow it some time. Many of you must have completed this step very quickly. Give it some time. This process must be completed in most of your pieces. See, अगर ऐसा एरर दिखा रहा है यहाँ पे मतलब डिपेंडेंसीज लोड नहीं हुआ है और डिपेंडेंसीज अपने आप लोड हो जाता है. Just give it some time.
Yes, Calvin, please share your screen. First, Calvin, can you close this? Close this. Close this. Show me your Project Explorer. Did you close everything? No, no. First, you show me your Project Explorer. Yes, Calvin, you can share your screen, please. Show me your Project Explorer. Where are your projects? Okay. If somehow you have missed your Project Explorer, just go to Window. Can you click on Window menu on the top? Click on Window. Yes. Show View. Mhm. Yeah. Can you see Project Explorer? Ah, wonderful. So yes, it's all there already. Yeah. User is there. The com.user is garbage. Okay, user is there. Contact service is there. So just open your contact service. Yes. Right click it. Just do a right click. Yeah, there. Yeah, wonderful. Do a right click. No, no. Just do a right click on the contact service. Yeah, right click. Just on top of the word contact service, do a right click. We are not able to see. Calvin, can you share your complete screen rather than just sharing Eclipse? That would be more better because we are not able to see half of the things. Anything that pop-ups, we will not able to see. You just have to stop sharing and then share your complete screen. That way, we'll be able to see any additional pop-up. All you need to do is just update your project and it will work. Wonderful. Yes. Go to Maven at the bottom, from bottom seventh, eighth position page. Can you see Maven? Yes, yes, yes. Wonderful. Click on update project. From there, update project. Yeah, can you see update project? Yes, click there. And what we'll do here is user and e server को भी select कर लो आप. User and e server को भी आप select. So what I'm doing here is nothing. Just नीचे offline and force update. If offline and force update and okay. First I'm doing is a see what happens is हम बहुत सारे dependencies add कर रहे हैं. Correct guys? Now those dependencies might not get load automatically sometimes because of any issues. So it is always recommended कि आप project update कर लो. Done. ठीक है. Now can you again go to the contact and Calvin just maximize the Eclipse. Yes, yes. Superb.
Can you show me very quickly? Can you show me the codes? Just open contact service. Yes, wonderful. SRC first folder SRC. Yes, you can open it. Main Java. On the top, the pack com. Wonderful. Show me your entity class. So wonderful. Just scroll down. So I'm doing a type of a testing. Can anybody tell me which is this type of testing call as? मैं एक तरह का टेस्टिंग अभी कर रहा हूँ कैल्विन के कोड में. कोई बता सकता है ये किस टाइप की टेस्टिंग है? Wonderful, thank you. Then I want to see your service interface and implementation class. Okay, good. Very nice. ठीक है, बढ़िया है. This is called as white box testing. I'm doing branch testing. I'm doing statement testing. This is called as white box testing. You guys might have heard of it. White box testing, gray box testing, black box testing. Done. Done. This is called as white box testing, which I'm doing right now. Please right click on contact service, run as Spring Boot application. ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर. हाँ, यहाँ भी चलेगा, ये से भी चलेगा. हाँ, run as नीचे है, नीचे है, run as. Very good. Spring Boot application. Second option. Allow is important. Guys, such type of firewall allow. Yes, please allow it. See, this is a network based project. तो आपका फायरवॉल बोलेगा अलाउ करना है नहीं करना है. आपने बोल दिया नहीं अलाउ करना है तो नहीं चलेगा. वेरी गुड. सी वो टॉमकैट पे रन हो गया है. कैन यू ओपन अप अ ब्राउजर? लोकल होस्ट कोलन 8002 लोकल होस्ट कोलन 8002 स्लैश स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश यूजर स्लैश 1001 contact slash user. ये हमारा कंट्रोलर. थ्रू कंट्रोलर ओनली यू कैन फायर स्लैश 101. यूजर आईडी इज 101. या हिट एंटर. वंडरफुल. ठीक है. नाउ similarly please run your user service. Right click on user service and run the application. नीचे है, देखो नीचे लास्ट, एकदम लास्ट में. दैट्स अ डिफरेंट एप्लीकेशन. यस, राइट क्लिक हियर. स्प्रिंग बूट ऐप. हाँ, वो ऊपर वाला वो. हाँ, this also started at 8001. Go to the browser. Here you new tab. Open a new tab. That will be localhost colon 8001 slash user slash colon 8001 colon. It's on port number 8001 slash user slash user ID 101 101. It should show me my user. The contact is not showing. Okay, why contact is not showing? Because हमने controller में changes नहीं किए. तो कर लेते हैं अभी. Can you please share your open your contact controller and application? Not control. User पे जाओ. Contact को साइड कर दो. User, go to the user. नीचे bottom में ना.
यूजर जो फोल्डर है, इसे ओपन करो। नहीं, ये नहीं करना, ओपन करो। साइड में वो छोटा सा एरो बटन है ना, नॉट दिस, इसको हटा दो, ये तो हटा दो। हाँ, जावा ऊपर फर्स्ट फर्स्ट फोल्डर, उसके बाद में फर्स्ट फोल्डर, उसके बाद में फर्स्ट फोल्डर, कॉम डॉट यूजर, यूजर एप्लीकेशन, ओपन दिस, वेरी गुड। ये रहा। थोड़ा कोड बड़ा कर दो। कैसे बड़ा करोगे? कंट्रोल प्लस बटन दबा दो, कंट्रोल प्लस बटन। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ ऑन लाइन नंबर 12, line number 12, yeah, press and enter. Write down at the rate bean, capital BEAN, सिर्फ B कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। वेरी गुड। N, बीन, N, L नहीं होगा, N होगा। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हिट एंटर। पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट, पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट, R कैपिटल, R capital, rest T capital, same spelling, it's not a different one. T capital, no space between rest and template. Very good. Next, after this, same line, write down rest template again, R small, rest everything will do. And method रहेगा तो brackets start and on and off करो, brackets on and off, brackets, yeah, on and off. Wonderful, thank you. Right, now इस end of the line में आप जाओ और enter press करो, बाहर निकलो वहां से, enter press करो। Very good. Huh? Okay, line number 15, we'll continue with line number 15 only. Line number 15 पे curly brackets on and off, curly brackets on and off. Super, super. Now here write down return new rest template, brackets on and off. Return, not return. RETUR. Return. Small letters R. R would be small letters. Yeah. Return new space new space rest template, R capital T capital. Brackets on and off. End of line semicolon. Semicolon brackets के पास रहेगा, semicolon और brackets में space नहीं रहेगा. Super, very good. Okay, do a control S, save करो इसे. Now here, see the yellow dots, Calvin. Just click on the yellow dots. It will ask you to import. Yeah, क्या बोल रहा है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं. पहले वो bean import करेंगे. Click on it. Yeah, import bean. Very good. Import first line, first वाला. Yeah, import it. Next, import ये first line है. Import Spring template, REST template, first line. Click on it. Again, click on the yellow dot. Click on the yellow dot again. Okay, आपने resolve कर दिया. नहीं, just do a control Z. And ऊपर ऊपर लाइन नंबर 3 पे क्लिक करो प्लीज. हाँ, रेस्ट टेम्पलेट. हाँ, लाइन नंबर 14, दैट येलो डॉट.
line number 3, the yellow dot, line number 13, not 3. yes. हाँ, ये रेस्ट टेम्पलेट इंपोर्ट है ना, इसे आप इंपोर्ट कर लो। ये फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दो, ये जो बॉक्स आया ना फर्स्ट लाइन पे, हाँ सेम इस पे भी क्लिक कर लो, फर्स्ट लाइन पे इंपोर्ट। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट, हाँ जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। यस, वो आ गया देखो ऊपर। सेम स्टेप रिपीट करो रेस्ट टेम्पलेट के लिए, लाइन नंबर 15, डिपेंडेंसीज विल गेट एडेड। यस, डबल सेलेक्टेड, वंडरफुल, ये भी आ गया। ठीक है, सेव इट। ओके, जस्ट सेव इट, just save it. All right, now what you do here is I am putting a piece of code in your, now open the REST controllers, left side project explorer, can you see the user controller? Project explorer में नीचे देखो form.user.user controller, नीचे already open है, नीचे एकदम नीचे आ जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। yes, here see वो जो user service application dot java selected है ना, उसके नीचे controller, click on the controller. Yes, click on the user controller. Very good, very good. Now what you do here is I am giving you a piece of code in your group. अब exactly वो पूरा का पूरा कोड कॉपी करो और इधर पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो, just to speed up things. Yeah, just give me a second. The code is there in the group. Copy it, the complete code, and replace it with everything. Okay, sometimes this approach also works. That I'm not really aware about the technology, but let me do a hands-on first, and then slowly understand क्या किया कैसे किया। Eclipse, यहाँ पे कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो, सो एवरीथिंग विल गेट रिप्लेस्ड। कंट्रोल वी, सुपर, सेव इट। So we just added 2 more lines here, but हमने कोड रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली जस्ट टू सेव टाइम। वेरी गुड, इसे सेव कर लो, कंट्रोल एस, सुपर। अभी what you have to do here, Calvin, is right click on user service on the project explorer. On the project explorer right click, यूजर सर्विस जो पेरेंट फोल्डर है, जो सबसे टॉप लेयर का फोल्डर। हाँ, नीचे नीचे, उधर नहीं, यहाँ पे नीचे मिडिल में ना यूजर सर्विस जो प्रोजेक्ट है, राइट। यस, उसके नीचे, ई सर्वर के नीचे यूजर सर्विस, और थोड़ा ऊपर 2-3 स्टेप्स ऊपर यूजर सर्विस दिख रहा है, जस्ट 2 to 3 स्टेप्स ऊपर यूजर, हाँ यस, राइट क्लिक इट, वंडरफुल, राइट क्लिक इट, उधर राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट। यस, ऑलरेडी रन हो रहा है। सो व्हाट विल डू हियर इज वी विल रीरन दिस प्रोजेक्ट। हाउ टू डू अ रीरन? On the top of this Eclipse IDE, can you see there is 2 red buttons? One red button is a big red button and another red button is a, no, don't click it. Okay, हाँ ये रीरन वाला है, इसके साइड में एक छोटा एरो है, डाउन एरो, या द रेड एंड ग्रीन के बाजू में लेफ्ट साइड। यस यस, क्लिक ऑन इट। या नाउ यूजर सर्विस को सेलेक्ट कर लो, दिस विल रीरन द प्रोजेक्ट। यस, क्लिक ऑन इट, ये सेम प्रोजेक्ट रीरन कर देगा। सुपर, go back to your browser and just refresh. Go back to your browser, just refresh this page, see contact bhi aa gaya। Done, Calvin? Okay, now
what we'll do here, Calvin, एक काम करते हैं यार, अब हम इतना आगे पढ़ गए तो we will continue this project in your laptop only. ठीक है, will you like to volunteer? चल, है ना, let's do that. Yeah, will do चल. So next step guys, हमने e server डाला था, e server already Calvin ने import कर लिया. Calvin, can you show the e server that you have imported? Yes, user service के ऊपर ही है e server. Yes, you have imported this, correct? Hmm. Can you also show me your browser जहाँ पे आपका स्प्रिंग इनिशियलाइजर है, जस्ट टू चेक वेदर आपने प्रॉपर्ली सेलेक्ट किया था क्या? स्प्रिंग इनिशियलाइजर दिखा दो. बढ़िया है, परफेक्ट है, मैं सब सब सही सेलेक्ट किया है आपने, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. आ जाओ, कम बैक टू योर ई सर्वर. Two small settings that we'll do here. Number one, Calvin, click on the second folder, src main java, second folder e server पे. नहीं, not here, the first folder. चलिए second नहीं, first बोलते हैं, उसके ऊपर वाला. Open this com.eserver. ई सर्वर एप्लीकेशन, ये हमारी मेन एप्लीकेशन फाइल होती है गाइस. यहाँ पे व्हाट वी आर गोना डू इज, फर्स्ट दिस इज अ टाइप ऑफ अ सर्वर, सो वी आर गोइंग टू एनेबल सर्वर. कैसे करेंगे? Calvin, go to line number 6, end of the line number 6 and press enter. Line number 6 के end पे जाओ और enter press करो. Wonderful. Now Calvin, write down here @ okay, E capital enable, लिखो enable. Very good. No spaces, eruka, EU, no spaces, EUREKA. Yes, but अरे बढ़िया था. E capital, yes, E capital, E capital. Good. Server, no space, S capital. Superb. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम बोल रहे हैं कि भाई तुम एरुका सर्वर हो. क्या हो तुम एरुका सर्वर हो. हम उसको एटोनेट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है. कैल्विन, नाउ कैन यू ऐड द डिपेंडेंसी? वो येलो बटन दबाना होगा आपको, राइट? या येलो बटन, फर्स्ट वन, यस, इंपोर्ट, डन, बढ़िया. सेव इट, कंट्रोल एस. गाइस एप्लीकेशन सेव करना है. हाँ, सेव हो गया, सुपर. स्टार मार्क ऊपर दिखता है अगर सेव नहीं होता. या थैंक यू कैल्विन, वी कैन सी योर स्क्रीन. Step number one, this is an Eruka server. I need to tell my application. Step number two, yes, can you see the resource folder? ये अभी जो फोल्डर हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे. प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे. जो फोल्डर अभी हमने सेलेक्ट किया है नीचे, एग्जैक्टली उसके नीचे वाला फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे. उसके नीचे वाला, यस, राइट क्लिक, न्यू फाइल, न्यू फाइल, न्यू फाइल. यहाँ पे लिखो application.yaml. Superb. So guys, Professor Calvin is here helping us out for the next part of the demonstration. Finish. Very nice, very nice. तो यार ये हमारा तीसरा माइक्रो सर्विस बन रहा है. ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि एप्लीकेशन डॉट यामल में क्या क्या सेटिंग्स चेंज करनी होती है? ये हमारी तीसरी माइक्रो सर्विस बन रही है. एनीबडी एल्स अदर देन कैल्विन हु वुड कुछ सेट करना होगा हमें? डू वी हैव टू सेट सर्टेन थिंग्स? पोर्ट नंबर, थैंक यू सो मच दिव्या. पहले तो पोर्ट नंबर सेट करेंगे. सो वेरी प्यार से, वेरी जेंटली कैल्विन राइट डाउन सर्वर डॉट पोर्ट. सर्वर धीरे धीरे टाइप करें. इंटेलिजेंस का यूज करेंगे. एस स्मॉल ही रहेगा, एस स्मॉल ही रहेगा.
Very good. Wait for this. Wait. Now don't do anything. Just wait for the हाँ ये नीचे थर्ड ऑप्शन आया करेक्ट, उसको सेलेक्ट कर लो यूजिंग योर माउस, डबल क्लिक इट और जस्ट क्लिक इट वंस. हाँ ये गाइस इंटेलिजेंस का यूज करो. इंटेलिजेंस यूज करने से प्रोग्रामिंग में एरर वगैरह कम होते हैं. इंटेलिजेंस मतलब वो अपने आप सजेस्ट करता है ये लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए. एआई एनेबल्ड है, यूज करो उसको. इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. Eruca server works by default on port number 8761. So port number हम क्या डालेंगे यहाँ पे 8761. Done. Guys, remember interview question. Eruca server works on default port number 8761. Just like how Tomcat works on 80. Done. Please press enter. One more enter. Enter. Just one more enter. All right. Add some blank space, backspace, and go back to the start of the line. Backspace दबा दो 2-3 बार. 4 पे जाएंगे. हाँ बस बस बस. अभी एरुका सर्वर है ना, इट्स अ सर्विस डिस्कवरी. इट विल रजिस्टर ऑल द सर्विसेज. फाइन एंड गुड. लेकिन एरुका का एक प्रॉब्लम भी है. एरुका ना अपने आप को भी रजिस्टर कर लेता है. वो बाकी सारे सर्विसेज को तो सर्च करेगा ही करेगा. ये पागल अपने आप को भी रजिस्टर कर लेता है, बोलता है मैं भी एक सर्विस. मतलब ये अपने आप को भी मॉनिटर करने लगेगा, जो कि हमें नहीं करने देना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम 2-3 सेटिंग्स चेंज करेंगे. सेटिंग नंबर 1. सेटिंग नंबर 1. प्लीज टाइप एरुका. स्मॉल में रहेगा सब. एरुका ए यू. हाँ एरुका ई के ए डॉट क्लाइंट. डॉट क्लाइंट डॉट डॉट नहीं था वो. डॉट क्लाइंट डॉट डॉट रजिस्टर. रजिस्टर. जस्ट टाइप रजिस्टर. हाँ रजिस्टर भी एरुका वो फर्स्ट आया है, उसको सेलेक्ट कर लो आप. तो क्या बोल रहा है ये कि मैं अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करूं क्या? नहीं मत करो. प्लीज राइट डाउन फॉल्स. एफ वो आगे कोलन के आगे फॉल्स. ओके सर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या करेगा एरुका अपने आप को भी रजिस्टर करके दिखाएगा, विच वी डोंट वांट. प्रेस एंटर. सी व्हेन समथिंग गेट रजिस्टर्ड उसकी रजिस्ट्री भी बनती है. रजिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस. राइट डाउन फेच. FETCH फेच. या फेच रजिस्ट्री वो आ गया वो सेलेक्ट कर लो पहला वाला. फॉल्स. बहुत बढ़िया. नाउ कैल्विन, द वे YAML वर्क्स. अच्छा YAML का वी विल कीप अ सेपरेट सेशन. व्हाट इज YAML एंड YAML. आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हो, आप डेवऑप्स में जा रहे हो, YAML आना चाहिए. YAML नहीं आता हम भूल जाओ. You can become a DevOps engineer and earn a salary of 30,000. Do you know how much time it takes to learn YAML? 2 hours. 2 hours compared to an opportunity such big. Okay. Now YAML works on spaces. सही स्पेस नहीं डालोगे कोड ब्रेक हो जाएगा. कैल्विन वो क्लाइंट दिख रहा है ना, क्लाइंट फिफ्थ लाइन का एग्जैक्टली उसी के नीचे यू हैव टू राइट सर्वर. तो बैक स्पेस डालना पड़ेगा एक दो. नहीं वहां जाना नहीं है. लाइन नंबर 8 पे ही रहना है. बी ऑन लाइन नंबर 8. बट लाइन नहीं नो अनडू इट. नो नो नो. हाँ लाइन नंबर 8 पे आ जाओ. प्रेस टू बैक स्पेस. इधर ही पे बैक बटन दबाओ. बैक. बस. सो क्लाइंट के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए. राइट डाउन सर्वर. डॉट डॉट वेट टाइम. वेट वेट. हाँ बस ये सेलेक्ट कर. जीरो डाल दो. जीरो.
सो व्हाट इज दिस सेटिंग? पहले हमने क्लाइंट का सेटिंग किया, फिर हम एरुका डॉट सर्वर का सेटिंग चेंज कर रहे हैं। एंड ये क्या बोल रहा है, कोई भी क्लाइंट को रजिस्टर करने के लिए ना, इट वेट्स फॉर सम टाइम। किसी को भी क्लाइंट को रजिस्टर करना है, थोड़ी देर वेट करता है, अरे 5 मिनट बाद रजिस्टर करो, 20 मिनट बाद रजिस्टर करो। हमारे पास टाइम नहीं है भाई, immediately register it. What is the wait time to register any microservice? Zero. दो छोटा सा हमने चेंजेस किया, क्यों किया वो भी बताएं। इसके बिना नहीं चल सकता था, आराम से चल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस, बस हो गया। अभी एक काम करो, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाओ, ई सर्वर फोल्डर देखो कहाँ पे है, नीचे है ना ई सर्वर, मेन फोल्डर ऊपर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं नहीं, वो रहा उधर ही, उधर ही ई सर्वर देखो आपका कहाँ है, ई सर्वर ब्रैकेट में बूट लिखा है, या करेक्ट 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 करेक्ट, ये राइट। इसको राइट क्लिक करो और रन करो। ये कुछ राइट क्लिक, ई सर्वर, राइट ई सर्वर है ना ऊपर, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, सेव कर लो। कुछ सेव नहीं है, हाँ सेव नहीं हुआ है फाइल, हाँ ओके करो, ओके करो, ओके 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 ओके, हाँ वो सेव कर लेगा, एक फाइल सेव नहीं हुई। थोड़ा ये नीचे कंसोल में, कैन यू जस्ट स्लाइड इट लिटिल बिट ऑन द राइट साइड, तो हमें दिखाई देगा। ये नीचे जो कंसोल है ना, हाँ थोड़ा नीचे से भी, नीचे से थोड़ा सा, दिस थोड़ा सा इन, at the bottom can you see a horizontal scroll bar? नहीं नहीं, ऐसे तो दिख रहा है कैल्विन, इधर का नहीं दिख रहा ना, इस तरफ का नहीं दिख रहा, हाँ वेरी, ये देखना है ना, ये पूरा चीज बता रहा है, क्या बता रहा है, हाँ इनिशियलाइज हो गया सर्वर, स्टेटस इज अप, पोर्ट नंबर 871 पे चल गया, स्टार्टेड ई सर्वर। हाँ कोई भी एरर आएगा तो यही आएगा गाइस, तो कंसोल रीड करना आना चाहिए। हो गया कैल्विन, गो टू द ब्राउजर, गो टू द ब्राउजर, इधर साइड में ये सब रहने दो, ये पुराना ये रहने दो, एक और एक नया टैब ओपन करो, localhost colon 8761, localhost colon 8761 colon 8761, enter। क्या बात है कैल्विन, वंडरफुल। सो गाइस दिस इज कॉल्ड एज एरुका सर्वर। ये क्या करता है, ये सारे माइक्रो सर्विसेज को मॉनिटर करता है। सो कैन यू सी हियर ऑन द राइट हैंड साइड, so Calvin you have to help me here, okay? See the current time is mentioned here, scroll down a little bit down, yeah, general info, can you Calvin, can you just hover your mouse over general info? हाँ ये रहा जनरल इन्फो। So this is info of your server, that means your own PC. It says total RAM available, how much, कितना करंट मेमोरी यूज हो रहा है, ये सारी चीजें वो बता रहा है, आईपी एड्रेस भी आपको बता रहा है, स्टेटस अप, डन। नाउ हियर one thing that it is not telling you is application। सबसे टॉप पे देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नो इंस्टेंसेस अवेलेबल, है ना, नो इंस्टेंसेस अवेलेबल, that means it is telling there is no, it is telling there is no microservices in the server, which is not right। This has happened because हमने वेब एप्लीकेशन बनाया यूजर को, और हमने यूजर को बनाया, यूजर और कॉन्टैक्ट हमने वेब एप्लीकेशन डिपेंडेंसी ऐड की, करेक्ट। अब हमें उसको डिस्कवरी क्लाइंट डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा, सुन भाई यूजर, तू एक वेब एप्लीकेशन तो है ही, बट तू साथ में एक क्लाइंट भी है, किसका, एरुका का, एरुका डिस्कवरी सर्वर का तू क्लाइंट भी है। सर्वर कैन ओनली रजिस्टर क्लाइंट्स। तो अभी डिपेंडेंसी तो ऐड कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। इन ऑर्डर टू ऐड डिपेंडेंसी मैन्युअली, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन गया अभी, अब डिपेंडेंसी कैसे ऐड करेंगे।
तो विल गो टू स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर। यहाँ पे क्या करो, ये जो एरुका सर्वर है ना, इसे रिमूव कर दो कैल्विन, जस्ट रिमूव इट। देयर इज अ, हाँ, रेड बटन, click on add dependency, select here discovery client, write down discovery client, ये आ गया, पहला वाला है। अभी ये है ना, हमें इंजेक्ट करना है हमारे यूजर और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं अभी वापस से पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बनाएंगे ना, नहीं, जनरेट नहीं करना है कैल्विन, नो, वी डोंट हैव टू जनरेट इट, बिकॉज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मेक, दिस विल गिव यू एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, राइट। फिर एम्प्टी प्रोजेक्ट में हम पूरा कोड यूजर का थोड़ी ना कॉपी करेंगे। अभी हमें ये करना है कि ये डिपेंडेंसी मैनुअली कैसे ऐड होती है, सो दैट वी कैन गो बैक टू माय यूजर फोल्डर और यूजर एप्लीकेशन में मैनुअली ऐड कर देते हैं, है ना, ये करना है। हाउ डू वी डू इट? वेरी सिंपल, क्लिक ऑन एक्सप्लोर, बॉटम एक्सप्लोर, yes, here are pom.xml is why we are using Maven projects. Done. Everybody, are you following? I hope you are doing it along with me and Calvin. If you have any doubts, you just let me know, we'll stop for you for some time. There is not much changes that needs to be done now. All right. So Calvin, मुझे इसको एक क्लाइंट में कन्वर्ट करना है। कैन यू सी लाइन नंबर 18, line number 18, just copy the line number 18, Calvin, just the line number 18, yes, copy it. Done, copied. Now please go to your Eclipse. Hmm. Now here, Calvin, what I want you to do is यूजर एप्लीकेशन कहाँ है आपका? ई सर्वर पे तो क्लिक करके इसे छोटा कर दो, यस, यूजर एप्लीकेशन ओपन है, वंडरफुल, ओपन रहने दो। At the very bottom there is a file called as pom.xml, pom.xml, yes, double click it, yes, correct। हाँ, यहाँ पे लाइन नंबर 17 के बाद क्लिक ऑन लाइन नंबर 17, नो, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18, एंटर दबा दो, पेस्ट द कोड दैट यू हैव कॉपीड, वंडरफुल। स्प्रिंग क्लाउड, ये डाला मैंने, और भी ऐसे ही दो तीन चीजें और कॉपी करनी है कैल्विन, एग्जैक्ट सेम पोजीशन। सो आई एम एडिंग एंड आई एम कन्वर्टिंग दिस प्रोजेक्ट इनटू स्प्रिंग क्लाउड, पहले ऐसे वेब एप्लीकेशन था, यस, गो हियर, ओके, लाइन नंबर 21 टू 24, एरुका क्लाइंट, 21 टू 24 डिपेंडेंसीज, ये पूरा कॉपी कर लो, वेरी गुड कैल्विन। सी, ये क्लाइंट क्या बोल रहा है कि दिस इज अ क्लाइंट, कहाँ डालोगे? स्क्रॉल डाउन थोड़ा हल्का, हाँ, वेरी गुड, वेट, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 डिपेंडेंसीज के अंदर, प्रेस एंटर, कॉपी पेस्ट इट। देखो अभी क्या हुआ, मेन क्लाउड डाला, फिर एरुका क्लाइंट का हमने डिपेंडेंसी ऐड किया। अब ये डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी होता है। So again, let's go back to the Spring Initializer. Scroll down. Yes, stop. लाइन नंबर 32 से लेकर के 42 तक कॉपी एवरीथिंग, नॉट कॉपी प्रॉपर्ली, आई गेस, हाँ, कॉपी इट, स्क्रॉल डाउन, लाइन नंबर 36, पेस्ट इट,
देखो बिल्ड के पहले करना है, आइडिया इज बिल्ड के पहले और डिपेंडेंसीज के बाद, राइट? बिल्ड के पहले और डिपेंडेंसीज के बाद. प्लीज सेव इट, प्लीज सेव इट, कंट्रोल एस, फाइल सेव करते रहना कैल्विन. हो गया, हो गया, डिपेंडेंसी ऐड हो गई. Can you do the exact same steps for contact service also? Yeah, go to contact service pom.xml. It's already there on the Explorer. I'm repeating this step if somebody have missed it. Left side पे जाओ, left side, Project Explorer, Project Explorer, pom.xml at the bottom. Yeah, see, it's there at the center. No, this is user का pom.xml, right? Contact service का pom.xml देखो, ऊपर है, left side नहीं. Check on left side. Demo के ऊपर है, देखो, demo के ऊपर. Yes, yes, yes. Click on it. We'll repeat the same step for you guys. जिसको अभी भी नहीं समझ में डिपेंडेंसी कैसे मैनुअली इंजेक्ट करते हैं, Calvin and me are going to repeat the same step. Go back to the dependency Spring Initializer again, Calvin. Yes, line number पहला स्टार्टिंग से वापस से करेंगे. लाइन नंबर 18. वंडरफुल. कॉपी इट. पूरा कॉपी नहीं हुआ. या लाइन नंबर 18 कॉपी किया. एग्जैक्टली कहाँ गया? हाँ, ये जावा वर्जन के नीचे, जावा वर्जन के नीचे पेस्ट. सुपर. Next again we will go back and then we will add one dependency. Yes, here 20 to 24 we'll copy it. Spring Cloud client है ये dependency copy करेंगे. नहीं dependencies नहीं, dependency 21 structure break हो जाएगा otherwise. Dependencies are already there. Copy it. Here line number 20 के बाद. So see, if you read line code number 22 to 24, Spring Boot Starter Web, मतलब ये वेब एप्लीकेशन है ऑलरेडी, इसको हमने क्लाइंट एप्लीकेशन भी बना दी, राइट? लाइन नंबर 27 इफ यू रीड, दिस इज अ टाइप ऑफ अ वेब एप्लीकेशन. वी हैव आल्सो कन्वर्टेड दिस एज अ क्लाइंट एप्लीकेशन. अब एक क्लास डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, वो भी ऐड कर देते हैं. सो दिस इज हाउ यू मैनुअली ऐड डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बॉटम 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 बॉटम. यस यस यस, लाइन नंबर 32 टू 42. मैनुअली अगर कैसे ऐड करना है तो ऐसे ऐड करना है. कॉपी इट. अभी देखो कोड में कहीं बिल्ड है, बिल्ड के पहले डाल दो. ये रहा बिल्ड, ये रहा बिल्ड से पहले डाल दो. 36, लाइन नंबर 36. सुपर. सेव इट, प्लीज सेव दिस. सेव हो गया, क्या बात है. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू हियर इज, कैल्विन, यूजर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सर्विस को रीरन करना है. कैसे रीरन करोगे? सेंटर में वो रेड बटन है ना, हमने थोड़ी देर पहले किया, रेड बटन. यस, क्लिक. दिस इज अ रीरन थिंग. यूजर सर्विस सेलेक्ट करो. यस, अभी वो रीरन होगा. जस्ट वेट, जस्ट वेट. फर्स्ट उसको थोड़ा टाइम देते हैं रन होने के. रन हो गया. कैन यू जस्ट बॉटम में कंसोल में थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करोगे तो हमें दिखाई दे क्या चल रहा है. नीचे वाला स्क्रॉल, हाँ थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करो. वेरी गुड गाइस. ओके, डन. सेम वे कॉन्टैक्ट सर्विस को रीरन कर दो. These three are all different apps. ये तीनों अलग अलग ऐप है दोस्त. Then contact service भी चलाया है हमने. Can we go to the browser again and go to the browser. Eruca server को refresh कर दो. Eruca server है ना? Not here, not this. This is the Spring Initializer. इसको रहने दो. Eruca server. No, that third tab it is open ना. उसके बगल वाले के बगल वाला. उसके बगल वाला. Next to it. Next to it. ये वाले, हाँ. Okay guys, how many number of instances do you see? Application 0, right? See, one has registered. Again refresh it.
रिफ्रेश दिस पेज आगे, एक तो आ गया है, हाँ रिफ्रेश करो, दो आने चाहिए, एक यूजर आना चाहिए, अभी एक अननोन एप्लीकेशन आ गया, ओके, और एक आना चाहिए, कॉन्टैक्ट रीरन नहीं हुआ आई थिंक, सो कैन यू जस्ट रीरन द कॉन्टैक्ट अगेन, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सर्विस, ओके, चेक द ब्राउजर, रिफ्रेश इट, एक आ गया, यूजर को दोबारा रीरन कर दो, दो सर्विसेज दिखनी चाहिए, अभी एक ही अननोन एप्लीकेशन दिख रहा है, दो अननोन एप्लीकेशन, सी नाउ एरुका सर्वर इज रजिस्टरिंग दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर रहा है। ये फेल हो गया कैल्विन, ये फेल हो गया, सेकंड वन नहीं आएगा, ओके, मिसिंग एंट्री, कैन यू, अच्छा, इतने सारे कोड्स ओपन है ना, इसे क्लोज कर दो, ऊपर जितने भी कोड्स ओपन है, जस्ट क्लोज एवरीथिंग, फटाफट यू क्लोज इट, ऑलमोस्ट डन गाइस, यू आर ऑलमोस्ट रेडी, डन, ओके, सुपर, नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज, सेंटर में देयर इज अ स्टॉप बटन, रेड स्टॉप बटन, अभी रीरन कर रहे थे ना उसके लेफ्ट साइड वाला, हाँ सब स्टॉप कर दो, क्लिक स्टॉप वंस ट्वाइस थ्राइस, वंस एक स्टॉप हुआ, twice, thrice. All the application that we have run in the background सब stop हो गए, सारे project stop हो गए, okay, सारे project stop हो गए, all right. Now we will do two small changes. अभी आपने देखा जब हमने सर्वर रन किया वहाँ अननोन एप्लीकेशन दिखा रहा था, correct, the application was saying the name of the application that it was showing was unknown application. So what we'll do here is we will rename our application, हम application को ना एक नाम दे देंगे, दोनों यूजर एप्लीकेशन है ना उसको एक नाम दे देंगे, so that we are able to understand कौन सा एप्लीकेशन एक्चुअल रन हो रहा है, कौन सा एप्लीकेशन एक्चुअल में रन नहीं हो रहा है, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल अगेन गो टू द एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल एंड वहां पे जाकर के ना हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, राइट, सो कैल्विन कैन यू गो टू एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल ऑफ यूजर्स, यूजर के ना एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल में एक बार आप चले जाओ, ये तो कॉन्टैक्ट है, यूजर यूजर सर्विस देख रहे हो, यूजर सर्विस, या वंडरफुल, नीचे नीचे यूजर सर्विस है, there, yeah, open it up, there can you see src slash main slash user, go bottom little bit, go bottom, go bottom, go bottom, src slash main slash resources, wonderful, वो रहा, मिस हो गया आपसे, yes yes, open it up, application dot yaml, यहाँ पे मेरी सारी सेटिंग्स, यहाँ मेरी सारी सेटिंग्स है, राइट, now here line number 3 I want you to write a small code, press enter, one more enter, line number 4 पे आ जाओ, go to the beginning of this line, अब थोड़ा स्पेस आ गया ना, वो स्पेस खत्म कर, write down spring.application.name, spring.application.name, name, not main, name, हम रीनेम कर रहे हैं इस एप्लीकेशन, या सेलेक्ट दिस कोड, हाँ,
इसका नाम दे दो यूजर डैश सर्विस, यूजर डैश सर्विस। यस यस, वंडरफुल वंडरफुल, या गुड। डैश सर्विस नहीं, डैश दे दो, डैश अंडरस्कोर मत डालो, सर्विस, हिट एंटर। ओके गाइस, हमने क्या किया यहाँ पे, इस एप्लीकेशन का एक नाम दे दिया हमने, सो दैट ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा। वन मोर एंटर, go to the beginning of this line, write down eruka.instance, eruka, eu, eruka.instance dot host name dot host। यस वो आ गया, देखो उसे सेलेक्ट करते ही वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर सेट कर देगा। राइट डाउन लोकल होस्ट, अब हम बता रहे हैं कि आप लोकल होस्ट पे रन होने वाले हो, आप लोकल होस्ट पे रन होने वाले हो। कैल्विन प्लीज सेव दिस फाइल, कंट्रोल एस, लाइन नंबर 4 टू लाइन नंबर 10 कॉपी कर लो। सेम थिंग you have to put in your contact service also, उसका भी नाम चेंज करना है आपको। So can you go to contact service, and there is the second folder called as src main dot resources। Yes, wonderful, click on it, application dot yaml। लाइन नंबर 4 पे जाकर के पेस्ट कर दो, लाइन नंबर 4 पे जाकर पेस्ट कर दो, या बैक स्पेस, नो 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 नो, गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड, undo 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 undo, control z, yeah, backspace, paste it। Now this is contact service, so line number 6, write down contact dash service, contact dash service। Superb, superb, thank you so much, save it, keep saving the files। Okay गाइस, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने हमारे प्रोजेक्ट्स को ना एक नाम दे दिया और हमने उसे बोल दिया कि तुम लोकल होस्ट पे चल रहे हो। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हमारा एरुका सर्वर स्टार्ट किया था हमने, राइट, my eruka server was telling there is some application that I am registering, but this application has no name, so I am registering unknown। देखा ना, just show me the browser again Calvin, see unknown, हमने नाम दे दिया यार। अभी Calvin come to the Eclipse, yeah, mm, done। Okay, so now what you need to do is you have to refresh all the 3 projects, Calvin. It's always a good practice that you keep refreshing your project, updating it। Why so, sir? Because इतने सारे अपडेट्स हो रहे हैं, राइट, बट बिफोर दैट I want you to do one more change, my dear friend, one more small change I want you to do, where user service application, can you go to the user folder, user services? No, this is not, ये तो डिलीट ही कर दो, com dot user। Okay, हाँ, राइट क्लिक एंड डिलीट इट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस, नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, ये गलत है प्रोजेक्ट, नो नो नो, डोंट डिलीट इट, डोंट डिलीट इट। Select com dot user on the top, first you select it, click on it and then right click it, now you do a delete, 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 up कर दो, and delete it from the hard disk also। Super। minimize contact dot servers, उसको आप छुड़ा कर दो, click on user dot service, click on first folder, yeah, click on, yeah, this, good, click on it,
यूजर एप्लीकेशन। गाइस अभी क्या है ना कि यूजर सर्विस को बहुत लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे यूजर सर्विस। सो यूजर सर्विस कैन गेट बिजी। सो नेटवर्क आर्किटेक्चर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, व्हाट लोड बैलेंसर डज इज इट ऑटोमेटिकली चेक्स कौन से रिसोर्स बहुत यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है। इट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर। ये सर्विस फ्री है तो इसका एक्सेस दे दो, यहाँ पे ये बहुत बिजी है तो इसको होल्ड करो। ये है ना नेटवर्क पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ माय यूजर सर्विस इज अ क्लाइंट। अब हमने बोल दिया ये क्लाइंट है एक, तो लोडर हमें एक चाहिए रहेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोड बैलेंसर। दिस इज अगेन अ फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट। लाइन नंबर 15 पे क्लिक करके और एक लाइन एंटर करो एट द एंड ऑफ लाइन नंबर 15 के बाद। यस, एट द रेट कैपिटल एल लोड बैलेंस, नो स्पेसेस, balanced, capital B, capital B, D. At the end, D will be there. D, small d, load balance। तो हमने क्या किया है, हमने एक लोड बैलेंसर डाला है गाइस। नेटवर्क बेस्ड अगर कोई भी एप्लीकेशन होता है तो लोड बैलेंसर चाहिए ही होता है, अदरवाइज सर्विसेज कैन बिकम अनअवेलेबल और टू बिजी एंड देन योर एप्लीकेशन विल जस्ट क्रैश। तो ये एक सर्विस है जो आपको स्प्रिंग बूट देती है, ये आप डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस करता है, राइट। कैन यू ऐड द इंपोर्ट फाइल, वो जो येलो डॉट है उस पर क्लिक कर लीजिए प्लीज, क्लिक ऑन द येलो डॉट, फर्स्ट इंपोर्ट, सुपर, सेव इट, सेव इट, सेव हो गया, डन। नाउ what I want you to do here, Calvin, is it's a good practice to refresh the project. How will you refresh it? Right click on the user service explorer में, right click, Maven, Maven, इतने सारे चेंजेस किए, Maven नीचे, अपडेट प्रोजेक्ट, इसमें ना सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, ऊपर के भी दो सेलेक्ट कर लो, offline and force update। Guys, what I'm doing here is I'm again updating my project। क्यों इतने सारे चेंजेस किए ना हमने। yes, okay, click on okay, we have done so many changes, right? Done, done। Now Calvin, I want you to run e-server first। yes, click on it। सही है, सही जा रहे थे, अरे सही जा रहे थे। e-server, superb। okay, go to the browser, show us whether the e-server is running or not। इसको रिफ्रेश कर दो, पता चल जाएगा। हाँ, see, no instances registered, application में no instances registered। Calvin, can you just highlight where it is written no instances available? माउस ओवर करके बताओ। हाँ देखो गाइस, कोई आप कोई भी माइक्रो सर्विस नहीं मिल रही इसमें। Now Calvin, go to the Eclipse, run the contact, first contact रन करना है, contact, देखो रन हो गया, registered with contact dash service। Can you go to the browser, Calvin? इसको रिफ्रेश करो, आ गया contact service, running at status, running at port 8002। See, ऑटोमेटिकली रजिस्टर किया मेरे एरुका ने, ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लिया मेरे एरुका ने। Now Eruka has this registry, which service is running where? Calvin, repeat the same step, user service, run karo, user service, yeah।
फ्रेश। क्या बात है कैल्विन, 14 लाख पैकेज फिक्स है तेरा, दोनों रजिस्टर हो गया। ओके 8001 8002, ओके दोनों सर्विसेज आर रजिस्टर्ड हियर। ओके ऑलराइट, नाउ कैन यू आल्सो शो ऑन द ब्राउजर, ब्राउजर में वो दूसरे टैब्स में ओपन है ना दोनों सर्विसेज। हाँ इसे भी रिफ्रेश करके दिखा दो वेदर इट इज रनिंग और नॉट, जस्ट रिफ्रेश इट, सी दिस इज रनिंग एंड देन लेफ्ट साइड में यूजर सर्विस ये भी रन हो रहा है। नाउ माय 3 is not running, refresh it once it will run, रिफ्रेश करो रन करेगा, और मे बी ओपन अप अ न्यू ब्राउजर इट विल रन। 102 okay, controller नहीं हो रहा for some reason, can you go to the code, can you go to the code, can you show me the controller, user com.user.controller, लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में देखो, कंट्रोलर फोल्डर में जाना है आपको, com.user.controller फोल्डर में लेफ्ट साइड, यस जस्ट अ लिटिल बिट बॉटम, just a little bit bottom, one more step down, com.user.controller, can you see, com.user.controller, user controller.java, open it up, अच्छा you have already opened it up, ठीक है, just scroll down a little bit down, little bit down, alright guys अभी है ना हमने हमारे एप्लीकेशन का नाम रीनेम कर दिया, राइट, we have renamed the name of the application as contact service and user service, correct if I'm right, yes, so अभी लोकल होस्ट कोलन 800 डालने का जरूरत नहीं है, see this code is gonna create a problem later on, suppose मैंने contact service 8002 से हटा के कभी चेंज करके 8009 पे डाल दिया, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना मेरा एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पे, तो यूजर तो खराब हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क, यू सी द प्रॉब्लम, इमेजिन मेरा कॉन्टैक्ट सर्विस which is now in port 08002, tomorrow I shifted to port 8009, तो क्या मैं बार बार आकर के यूजर सर्विस में कोड चेंज करता रहूंगा क्या, नहीं करूंगा, मेरे पास कौन है, मेरे पास एरुका सर्वर है, नो मैटर वेयर माय कॉन्टैक्ट सर्विसेज आई कैन ऑलवेज आस्क माय एरुका सर्वर मुझे कॉन्टैक्ट सर्विस का एक्सेस चाहिए, एरुका सर्वर फिर बोलेगा ये ले ब्रो ये रहा, आई डोंट नीड टू नो द लोकेशन वेयर माय कॉन्टैक्ट सर्वर इज रनिंग, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कहाँ रन हो रहा है वो, एरुका सर्वर को सब पता है, वो बता देगा यहाँ रन हो रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट भेज, सो व्हाट विल डू हियर इज कैल्विन लाइन नंबर 35 इसको कमेंट कर दो, दो स्लैश मार्क के स्टार्टिंग में, और ये लाइन को वापस से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो, सेम लाइन, सेम लाइन, full line you copy it and you paste it, copy and then you paste it just below it, सुपर, हाँ ये लोकल होस्ट कोलन 8002 है ना, यस, नाउ वी हैव एन एप्लीकेशन नेम, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं,
राइट डाउन कॉन्टैक्ट डैश सर्विस, कॉन्टैक्ट डैश सर्विस एप्लीकेशन का नाम हमने जो रखा था, इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट कोलन 8002, या जस्ट राइट डाउन, या दैट मच, वेरी गुड, कॉन्टैक्ट डैश सर्विस, कॉन्टैक्ट डैश सर्विस, कॉन्टैक्ट, spelling mistake, super. This name is exactly the name that we had just set up 2 minutes before in the application.yml file of contact service, है ना? अब कॉन्टैक्ट सर्विस कहीं भी रहने दो, ठीक है, यूएसए के सर्वर पे रहने दो, अफ्रीका के सर्वर पे रहने दो, हमें मतलब नहीं है दोस्त। मैं मेरे एरुका सर्वर को बोलूंगा मुझे कॉन्टैक्ट सर्विस चाहिए, एरुका सर्वर के पास पूरी लिस्ट है कौन सा कहाँ रन हो रहा है, वो अपने आप कॉन्टैक्ट करा देगा। डिड यू सी हाउ पावरफुल द आर्किटेक्चर इज? मुझे ये भी नहीं जानना कि मेरा एप्लीकेशन किधर रन हो रहा है, दैट माय एरुका सर्वर विल टेक केयर। सेव दिस, इसे सेव कर दो, कंट्रोल एस, हाँ, ओके, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रीरन, रीरन दिस, रीरन यूजर सर्विस, खाली यूजर सर्विस रीरन कर। प्लीज गो बैक, just do a small refresh to the Eruka server, देखो आ गया, है ना, देखो आ गया, Eruka सर्वर रिफ्रेश करो, यूजर सर्विस रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, ओके, इसे क्लोज कर दो। हाँ ये भी चलेगा भाई, द वे अभी डन। So let's get back to what we have created. We have created a user service, we have created a contact service, we have created an Eruka discovery, we also saw what is the power of Eruka service। ये पूरे माइक्रो सर्विसेज इसके पास रजिस्टर्ड रहते हैं, लोकेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है। एरिका सर्विस को बोलो भाई मुझे इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है, ये डिटेल चाहिए, वो अपने आप तुम्हें ला करके दे देगा। सो एज अ नेटवर्क इंजीनियर ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट लुक एट एरुका सर्विस डैशबोर्ड। एरुका सर्विस के डैशबोर्ड पे खाली ऐसे देखूंगा मैं, सब चल रहा है, वेरी गुड। एज अ डेवलपर आई विल नॉट टेल यू, सी पेमेंट टीम, यूजर टीम को मैं बताऊंगा ही नहीं मेरा सर्वर किस, मेरा एप्लीकेशन किस सर्वर पे जा रहा है, आई विल नॉट टेल यू। I'll just tell you मेरा एप्लीकेशन का नाम है, my application name is contact service। Done guys, any doubts? Can we move on to the final part? Calvin, कोड, कोड तो भेज दो यार, ऐसा मत करो। Now Calvin has the code, so if anybody wants the code and everything, catch hold of Calvin now। Okay, 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 okay। So anybody wants any code, you can request Calvin right now। Calvin is kind enough, Calvin will put it into the group। कंट्रोलर डाल दिया, और क्या डालना है, और YAML फाइल डाल दो, YAML फाइल, हाँ ये डाल दो, ये चेंजेस था। और लोड बैलेंसर डालना मत भूलना, लोड बैलेंसर इज इन द यूजर, राइट, यूजर, सो यूजर, हाँ ये रहा, पूरा ही डाल दो, या फिर सिर्फ लोड बैलेंसर भी चलेगा, एक ही लाइन चेंज करना, एट द रेट लोड बैलेंस। लोड बैलेंसर क्या है पता रहना चाहिए, माइक्रो सर्विस क्या है पता रहना चाहिए, ऑटो वायर्ड क्या है पता रहना, दीज आर ऑल टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच आर वेरी इजी। From today onwards अगर you get an interest कि how amazing powerful microservice is, और आज से भी अगर शुरू करोगे ना, within a month's time you guys can start building up microservices। जावा नहीं भी आता है ना, आज से 1 महीने के अंदर you can become a Java expert। Spring Boot नहीं भी आता है, from now also see the power of everything, कितना powerful है ये। That अभी एक लास्ट फाइनल चीज बच गया है जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कौन बताएगा क्या बच गया?
there's one last thing that we have not implemented. API गेटवे बच गया है यार. Yeah. तो now the problem here is मेरा client यानी कि my user knows where is user service, my user knows where is contact service. What the hell? User should never ever know where and how things are working. यूजर को कभी पता नहीं चलना चाहिए दोस्त कि कहाँ पे क्या चीजें बन रही है. Will GPay give you the access to its server? देगा? या पेटीएम गेटवे आपको आपके सर्वर का लोकेशन बताएगा? नहीं बताएगा ना. आपने तो बता दिया. आपने तो बता दिया कि सर, dear user, my user service is working in port number 9001 or 8001 and my contact service is working in port number 8002. आपने तो सब बता दिया यार. That's a big problem. Plus, suppose I'm a user and you are telling, सुन, अगर तेरे को ऑर्डर प्लेस करना है तो इस वेबसाइट पे जा. अगर तेरे को अपना यूजर डिटेल चेंज करनी है तो इस यूआरएल पे जा. अगर तेरे को अपना एड्रेस अपडेट करना है तो इस यूआरएल पे जा. अगर तेरे को सेलर अकाउंट बनाना है इस यूआरएल पे जा. अगर तेरे को डील ऑफ द डे देखना है तो इस यूआरएल पे जा. क्योंकि हम माइक्रो सर्विस यूज करते हैं. यूजर बोलेगा भाई रहने दे तू, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तेरी माइक्रो सर्विस. क्या बोल रहा है तू? To use all your features, I will go to different websites. हाँ, नहीं चाहिए ब्रो, नहीं ऑर्डर करना मेरे को. तो दैट इज अ प्रॉब्लम. वी नीड एन इंटरफेस. वी नीड एन इंटरफेस. हमें एक मिडिल लेयर चाहिए यार, which will act as a single entry point and a single exit point. सारे रिक्वेस्ट यहीं से लेगा वो जहां अंदर अंदर जो जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस करेगा, यूजर के पास जाएगा, ऑर्डर के पास जाएगा, जो भी करेगा और आपको रिक्वेस्ट पोस्ट कर देगा. डज इट मेक एनी सेंस व्हाई वी रिक्वायर इट? सिक्योरिटी, ईज ऑफ यूज. पहले तो यूजर को बचाना है हमारे इंटरनल लोकेशंस, एप्लीकेशंस के डिटेल से, देना नहीं है, राइट. सेकेंडली, ईज ऑफ यूज भी नाम की चीज होती है ना. इतने पोर्ट नंबर्स कैसे याद रखेगा? डन. इज इट क्लियर? एपीआई, application programming interface, it's just an interface, guys, for security purpose, for ease of use. All right, Calvin, Spring Initializer browser, open the browser, Spring Initializer. Let's try to wind up in 15 minutes. Yeah, done. Close it. Yes, close it. Super. Okay, Java है, ठीक है. Project type Maven. Project type has to be Maven. Yes. Now my group name, this is API gateway, right? This is API gateway, correct? So you write down API gateway, com.api gateway, com.api gateway. Super. Artifact API gateway. Just write down API gateway. Description. This is API gateway for KC cart. We are building our application. Guys, ये प्रोजेक्ट को बड़ा बनाओ और किसी को चिपका दो 1 करोड़ में. This is how the architecture is built. पैकेज नेम, वो लास्ट का ये हटा दो, पीछे का एक एपीआई गेटवे, एक ही चाहिए बस. डॉट भी हटा दो. सुपर सुपर. डिपेंडेंसीज, very carefully. Number one, this is a gateway. ये gateway है. Okay, so search gateway. हाँ, ये रहा gateway routes.
सुनो, गेटवे क्या करता है पता है? गेटवे पूरे एप्लीकेशंस के ऊपर है ना ऐसे आ जाता है. The moment you put gateway, what gateway does is it can redirect you to different port numbers or different IP addresses. Right? ये URL सेट करके देता है, क्या डालोगे कहाँ जाएगा. प्लस दिस इज ऑल्सो क्लाइंट, हमें इसको भी एज ए क्लाइंट रजिस्टर करना है. करेक्ट. तो डिस्कवरी क्लाइंट रहेगा ही रहेगा. एड डिस्कवरी क्लाइंट, अनदर डिपेंडेंसी, एड डिपेंडेंसीज, डिस्कवरी क्लाइंट. अब वो मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं है. वो 3-4 कोड हमने कॉपी पेस्ट किए थे ना फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, की जरूरत नहीं है यार, अभी ऐड कर. डन. प्लीज एड इट. Now there are many dependencies. There are many other dependencies. अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं है, हम इतना यूज करेंगे as of now. But there are things like actuators, which monitors the health of the project, and many things that work for servers. आज के लिए इतना ही. We will not complicate this project. But those who register for advanced training programs, I'll tell them into detail, A to Z. Generate, generate, generate. Also, uh, can you take a snapshot of this, Calvin, and post it on the group? इसका ऐसे स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट या स्निप ले लो प्लीज, और जो हमारा ग्रुप है वहां पे आप डाल दो, so that people can try this on later on as well. I'll put it, otherwise wait. I'll take a snip and I'll put it. I'll do it. Don't worry, I'll do it. Okay, let me also help you a bit. Thank you so much, Calvin, for volunteering. Post it. Post it. Okay, post it on the group. How wonderful. Now Calvin knows the step. क्या बात. API gateway डाल दिया. Extract here. Extract here. Very good. ये रहा प्रोजेक्ट. एक्सट्रैक्ट हो गया. Done. Now open up your Eclipse. File, open project. Calvin, if your PC is working slow, you can always stop the applications that are running. If it is not working slow, then you can go ahead. No problem. File. Yes, click on it. Yeah. Yeah, on the top, file, open project from file system. Superb. Directory. हाँ सही था. What happened? अच्छा, seems to stuck. Please save this. Yeah, save this file. इसको पहले सेव कर लो जो आपने अभी एडिट किया. हाँ, इसे सेव कर लो. Yeah. On the center there is red stop button. Please press those stop button 3 times. Yeah, because there are three applications running in the background. It will eat up your RAM and memory. ये एक प्रोजेक्ट नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. वन मोर टाइम. वन मोर स्टॉप. डन. ये क्लोज कर दो. ये सारे फाइल्स जो ओपन है ना, इसे क्लोज कर दो. गुड. नाउ यू डू द स्टेप्स. फाइल,
open. Very good. Wherever your location is. Yes. API gateway and select. Wonderful. Acha, already imported. It's done already. Yeah, yeah, it's already there. Cancel it. Hmm. Yeah, it's already there. Okay. Calvin, can you also delete the demo project if it is not of any use? Right click there, delete, delete from hard disk also. बस बस ठीक है. Calvin, two changes and we are all set and done. Go to the first folder, src.java, src main java. Hmm. Yes, application. यहाँ पे ना हमें बस एक चीज बोलनी है कि ये एक डिस्कवरी क्लाइंट है. So line number 6, press enter. Line number 6, press enter. Okay. E capital, D capital, C capital. At the rate enable discovery client. At the rate enable discovery client. E capitals, no, not the complete thing capital. Just E capital, D capital, and C capital. Enable, ENABLE. Very good. Discovery, D capital D. Discover, VERY. COVERY. Client, C capital. Client. Very good. Save it. इसका इंपोर्ट कर लो आप, डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर लीजिए बस. How will you do it? Just right click on that वो yellow button is there, right? Yeah, yeah. First one. Very good. Save it. Save it. So guys, please make this change. Okay. Next is, can you go to src main dot resources? Right click here. और वो हम application dot yaml फाइल बनाते हैं ना. Right click new. No, not run as. Right click new file. File. Application dot yaml. Yes, 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 yes. तो गाइस, बोलने वाली बात नहीं है. फर्स्ट थिंग, पोर्ट नंबर. सर्वर डॉट पोर्ट. दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन. सर्वर डॉट पोर्ट. इसको आप किसी और पोर्ट पे चला दो. 8001, 8002. इसको 8003 पे चला दो. नीचे सेलेक्ट करो सर्वर डॉट पोर्ट. नो नो, गलत सेलेक्ट कर लिया. थर्ड नंबर पे सर्वर डॉट पोर्ट सेलेक्ट करना. यस, सेलेक्ट दिस. 8003. यस, एंटर. एंटर. नाउ वी आल्सो हैव टू सेट द एप्लीकेशन नेम. अब हम फटाफट कर लेंगे, हमें पता है. और एक एंटर कर लो. वन मोर एंटर. स्पेस नहीं रहना चाहिए. स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम. स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम. एपीआई डैश गेटवे. एपीआई डैश गेटवे. गुड. नेक्स्ट लाइन. और एक लाइन स्पेस डाल देंगे. वन मोर लाइन. फ्रॉम द स्टार्टिंग राइट डाउन एरुका डॉट इंस्टेंस डॉट होस्ट नेम. किस होस्ट पे चल रहा है वो बता देंगे. एरुका इंस्टेंस डॉट होस्ट नेम. एच. यस, एंटर. लोकल होस्ट. हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं इसको. सुपर.
Superb. Next line. Last 5 lines of code, my dear friends, 5 to 10 lines of code. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो. We are doing something called as route setting. Route setting. It's like telephone exchange. पहले टेलीफोन एक्सचेंजेस होते थे ना गाइस. आपको अगर किसी को भी, अगर जैसे आपको डायल करना है लैंडलाइन पे, अभी तो मोबाइल फोन्स में तो सारी कहानी खत्म होगी. पहले डायल करना होता था स्टेट कोड, सिटी कोड, 022 फॉर मुंबई. एम आई राइट? इफ यू प्रेस 022 तो वो मुंबई को लोकल लाइंस को कनेक्ट करेगा. राइट? इट इज लाइक अ टेलीफोन एक्सचेंज. ओके. आपसे रिक्वेस्ट लेगा एंड देन इट विल डायरेक्ट इट वेयर एवर इट फील दैट कि ये जगह पे डालना चाहिए. दैट्स व्हाट इट विल डू. क्लाइंट बोलेगा यूजर चाहिए तो वो लेकर के जाएगा यूजर के पास. कहाँ ले जा रहा है वो क्लाइंट को नहीं बताएगा. सो वी सेट समथिंग कॉल एज स्प्रिंग. अच्छा, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट, नहीं, स्प्रिंग डॉट क्लाउड. स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट्स डॉट. yes, yes, can you press enter? नहीं, not this one. गड़बड़ 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 गड़बड़. ओके, स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे, इतना ही करो बस. स्प्रिंग डॉट क्लाउड dot gateway dot routes dot route. Can you see routes? नहीं दिख रहा. कोई बात, कोई बात नहीं. Go back. नहीं नहीं, don't select this. This is not required. Go back. Yeah, just one more step back. Press and नहीं, इसको हटा दो. इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे मैनुअली टाइप करेंगे. ठीक है? इट इज नॉट सजेस्टिंग द कोड, so don't worry, we'll type it manually. ठीक है? routes dot routes, हमें routes चाहिए. dot routes. हाँ, नहीं, not this. Go back one step. हाँ, वो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो. डिस्कवरी नहीं, नहीं, ये भी नहीं. राउट्स डॉट सेलेक्ट करो. सेलेक्ट राउट्स डॉट आईडी, टाइप आईडी. नहीं आ रहा. एनीवे, कैल्विन, लीव इट. विल गो ऑन अ हार्ड कोडिंग मोड. ओके, चलो. क्या करेंगे हम यहाँ पे? स्प्रिंग लिखो. स्प्रिंग डॉट क्लाउड ओके. प्रेस एंटर. मर्ज कर रहे हैं. ओके. व्हाट? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. कैल्विन, ये लाइन नंबर 12 हटा दो. रिमूव लाइन नंबर 12. Go to line number 6. Press enter. Okay. Now go 2 steps back so that you are exactly below application. Write down cloud. Hmm, colon. Colon, not this. Colon. Press enter. Exactly below name. Space bar. Ah, write down gateway. Hmm, colon.
press enter, give two space, write down routes. Yes, अब आया routes. Go back, dot, write down dot. हाँ, अब आया था routes. See, that came now. Super. हाँ, सब select कर लो, select it, double click it. Write down item. अरे वो सही था. Dash. हाँ, do it again. कोई बात नहीं, do it again. Routes. I'll explain you the code also in some time. ID, ID colon. Very nice. Colon. Give one space. Write down user dash service. ओके, सो फर्स्ट हम सेट कर रहे हैं, अगर यूजर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो कहाँ भेजना है, हम ये सेटिंग सेट कर रहे हैं. फिर कॉन्टैक्ट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो कहाँ भेजना है, दैट्स व्हाट माय एपीआई गेटवे इज ऑल फॉर. ओके, तो हमें राउट सेट करना पड़ता है. प्रेस एंटर. आईडी के नीचे, एकदम आई के नीचे से राइट डाउन यूआरआई. यूआरआई, यस, कोलन, उसके आगे कोलन स्पेस एलबी कोलन फॉरवर्ड स्लैश दो डाल दो, एलबी 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 कोलन colon and then two slash. Super. Colon and two slash user service. User dash service. क्योंकि हमारा एप्लीकेशन का नाम ये. Hit enter. PRE predicates. PRE. हाँ, वो सेलेक्ट कर लो कैल्विन, वो जो आ रहा है ना, वेरी गुड, बस 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 सही. राइट डाउन कैपिटल P पाथ is equals to slash user slash star, दो स्टार डाल. एक ही स्लैश रहेगा और दो स्टार रहेगा, एक ही स्लैश रहेगा, दो स्टार रहेगा. गाइस बहुत सिंपल है कोड, कोड समझो, ठीक है. मैं एपीआई गेटवे डाल रहा हूँ बीच में. अब यूजर मेरे एपीआई गेटवे को कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट यूजर के पास नहीं जाएगा. क्या बोलेगा, ये बोलेगा सुनो, अगर यूआरएल में स्लैश यूजर करके रिक्वेस्ट आएगी तो यूजर सर्विस को जाके कांटेक्ट करो, वो जहां कहीं भी हो दुनिया में. राइट, ये हमने सेटिंग सेट कर ली. नाउ माय यूजर विल नाउ ऑलवेज कनेक्ट विद 8003. मेरे यूजर को 801 802 से कोई मतलब नहीं है, उसको हम बताएंगे ही नहीं, मतलब तो छोड़ो, हम बोलेंगे नहीं उसको. हम उसको सिर्फ बोलेंगे 8003 पे जा भाई, तेरे को क्या चाहिए 8003 पे एपीआई गेट. ओके कैल्विन, कैन यू कॉपी फ्रॉम द आईडी, वो डैश आईडी है ना, लाइन नंबर 10 टू लाइन नंबर 13 कॉपी करके एग्जैक्टली उसी के नीचे पेस्ट कर देना. सेम चीज फॉर कॉन्टैक्ट सर्विस, लाइन नंबर 14 पे पेस्ट कर. बट एग्जैक्टली वो नहीं, गलत हो गया. इट शुड एग्जैक्टली बिलो द डैश. यस, अभी भी हाँ हाँ अभी अभी हाँ ठीक है. यूजर के बदले कॉन्टैक्ट डाल दो 14 15 17 लाइन पे, जस्ट मेक इट कॉन्टैक्ट. We are almost contact. We are almost there. CON contact. We are almost there, guys. अभी ये जो लाइन नंबर 20 का कोड है, राइट, लाइन नंबर 22 जितना भी नीचे तक है, इसको है ना ऊपर डाल दो थोड़ा, यहाँ मतलब कट पेस्ट इट. नहीं नहीं, नॉट लाइक दिस, जस्ट कट इट and maybe put it on line number 3 on the top. I'm just rearranging the code, nothing else. Server dot port के नीचे कर दो. हाँ,
थोड़ा स्पेस डाल दो दोनों कोड्स के बीच में। लाइन नंबर 2 के बाद एंटर, हाँ यस, लाइन नंबर 6 के बाद यू डू एन एंटर। Yes, just rearranging the code, nothing else. So guys, what I have done here is API gateway में route set कर सकते हैं। route मतलब it will control how you are accessing the software। अब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ये दो URL से ही चलेगा, /user/contact। इसके बदले आप कुछ भी डालोगे ये वर्क करेगा ही नहीं, बिकॉज ऐसी सेटिंग हमने कर दी। जो एंट्रीज राउट पे रहती है बस वही राउट के थ्रू ही यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन, otherwise there is no other way of accessing it। Please save this, Calvin। कंट्रोल एस, राउट सेट हो गया, ठीक है। एक बार है ना रिफ्रेश कर लो एप्लीकेशन एपीआई गेटवे, राइट क्लिक ऑन एपीआई गेटवे, मैवन अपडेट एक बार। व्हाई वी आर अपडेटिंग इट, just in case some of the code has not been properly saved or dependencies load नहीं हुई। मैवन 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 अपडेट, हाँ बस दैट्स इट। डोंट सेलेक्ट अदर्स, अलग बाकी को मत करो, जरूरत नहीं। अब बाकी क्यों करना, कर सकते थे वैसे बट ठीक है। जस्ट अ सिंपल रिफ्रेश गाइस। ऑलराइट ऑलराइट डन। प्लीज क्लोज, हाँ नहीं ठीक है चलो। नाउ we'll run the project, Calvin, and we'll see if the entire minute of day 1 day 2 was any fruitful or not। we'll start with running the server। सबसे पहले तो सर्वर चला दो, so that red button e server। oh, right, wait till it says everything all okay। yeah, can you go to the browser and show us that localhost colon 8761 is working? Can you go to the browser? Localhost colon 8761, just edit it out, just put 8761, no user, nothing, just 8761। done, press enter। गाइस सर्वर एरुका सर्वर चल रहा है, गुड राइट। डिड यू सी एनी माइक्रो सर्विसेज बीइंग रजिस्टर्ड, यस और नो? कोई माइक्रो सर्विस रजिस्टर्ड दिख रही है, यस और नो? नो, क्योंकि कोई भी माइक्रो सर्विस रन ही नहीं हो रहा है। तो नाउ व्हाट विल डू हियर इज विल गो एंड वी विल रन फर्स्ट, तो कॉन्टैक्ट रन कर लेंगे। प्लीज रन कॉन्टैक्ट। पहले कॉन्टैक्ट रन होना है, यूजर पहले रन नहीं करना है, बिकॉज यूजर ऑलवेज tries to connect to contact service। refresh the, yeah, this is done। can you please go to the browser, refresh, आ गया कॉन्टैक्ट सर्विस आ गया, ठीक है। हमने कहीं बताया 8002 पोर्ट पे कॉन्टैक्ट सर्विस चल रहा है, नहीं, उसने अपने आप रजिस्टर कर लिया। गो बैक टू द Eclipse, please start user service, please start user service। user service started। may I request Calvin to please go to the browser and show everybody that user service is working। refresh, तो user service भी आ गया, user service भी आ गया। Calvin ब्राउजर में साइड में एक न्यू टैब, काइंडली ओपन इट अप।
Yes, there is a question coming up. Can we do the same project in Python and using MongoDB? Yes, 101%. Okay, you can do the same thing using any other programming language. There is no issue whatsoever. ये आर्किटेक्चर है. Okay, all right. So user service can be built on Python, and your contact service can be built on .NET. One can be built on Java. तुम्हारी मर्जी. It is independent now. Yes, on the browser, please type localhost colon 8001 colon user slash localhost colon 8001. Hmm, colon 8001. वो आ गया. You can click on it. No, no, not 8001 will not work because हमने controller set किया slash user. हमने controller set किया. Yeah, slash user. No, no. 8001 was there. That was all good. Slash user slash user ID. User ID was 1001, 1002, 34. 1001 now. 101. It will not give you any result because user was 101. Hmm. It will happen. It will work. It will work. Don't worry. है ना? ये रहा. ठीक है. Similarly, contact service हमारी है ना. The second tab, the contact service is already open. Can you go to the second tab? Hmm. इसको रिफ्रेश कर लो एक बार. डन डन. वो रन हो गया. रिफ्रेश हो गया मतलब डन. Both the services Eruka is running. Go to the Eclipse. Please run API Gateway. Right click on API Gateway project. इधर नहीं आएगा ये क्योंकि हमने एक बार भी रन नहीं किया उसको. Right click on the project. Yes, API Gateway है ना. Yes. Right click. Very good. Right click. Run as. Run as at the bottom. Yeah. Run as Spring Boot app. फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो फर्स्ट टाइम मैनुअली रन करना पड़ता है. क्या बात. कैन यू गो टू द एक्लिप्स. No, not Eclipse. Can you go to the browser Eruka server? Eruka server, refresh it. यहाँ API gateway भी आना चाहिए. Refresh किया. Yes, guys. Can you see API gateway registered at port 8003? Yeah. Can you guys see? Hmm. Interesting. Now what we have done here is API gateway में ना हमने URL route set किया. See user सर्विस के लिए यूजर पे जाएगा 8008 पे, 8001 पे, फिर बाद में कॉन्टैक्ट के लिए 8002 पे जाएगा. अरे इतना क्यों करना है काम. तो हमने राउट सेट किया है. राउट हमारा है एपीआई गेटवे पे. एपीआई गेटवे किस पे चल रहा है 8003. तो हम यूजर को सिर्फ बोलेंगे गो टू 8003. तुम्हें जो चाहिए 8003 से रिक्वेस्ट करो. So Calvin, please open a new tab. Please open up a new tab. And now browser में you have to start API gateway. API gateway is at port number 8003. Okay, 8003. So write down localhost colon 8003 8003 स्लैश स्लैश. अभी कोड दिखाओ. कोड में हमने क्या सेट किया था. जस्ट ओपन अप योर एक्लिप्स वंस. हमने देखो यहाँ पे सेट किया है लाइन नंबर 17. लाइन नंबर 17 हमने सेट किया है 8003. if we type user slash any id, if we pass or anything else after user, if we pass, it will connect to the user service. चलो ये कर लेते हैं. 8003. Calvin, go to the browser. 803 slash user
slash give me a user ID 1001, and yeah, wait here for a 100 101, sorry, not double zero, 101. Just wait here, guys. 8003 पे API server run हो रहा है. Am I right? It has got API server. Am I right? Can I have a quick acknowledgement, please? Yes, yes. API में कोई भी API गेटवे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसमें कोई भी यूजर, कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी कोड, कोई भी डेटाबेस, कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है. It's just simple application with routes. Hmm? Yeah? Please hit enter, Calvin. ये देखो. Can you zoom this? Can you zoom this? तो हमें वो थोड़ा दिखाई देगा. हाँ. See. Did you see what happened? API गेटवे में गया, API गेटवे से यूजर सर्विस के पास गया, यूजर सर्विस से यूजर लाया, दिखा दिया. Same place, same browser. Can you type, instead of user slash 001, can you please type contact slash user slash 001? Huh. Very nice. Yes. Yes. See, this is how we connect to user service or contact service. Hit enter. See, from API gateway, I went to my contact service. No need to go to individual services. In fact, हम बताते भी नहीं. Flipkart.com, everything is there. You remember when I did flipkart.com/HP, so it took me to the HP page. How? This is how. Done? Is the complete architecture done here? Okay. So, Calvin, thank you so much. Just do a little bit of help for us. Right? क्या help करेंगे आप? आपका जो API gateway का code है ना, in your C drive, which is there, code is there, right? On your, yes, 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 Eclipse workspace. API gateway, हाँ, API गेटवे, ये सब, इनफैक्ट सारा ही कोड आप जिप करके हमें दे दो, ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? Zip every single damn thing and send it to the group. Metadata नहीं चाहिए. Metadata is not required. Metadata is for Eclipse. API gateway, contact server, और ये contact और user controller भी मत दो. User controller और ये भी मत दो. नीचे के दो controllers है ना, वो भी मत दो. People might get confused. Only 4 folders: user, e-server, contact and API. एक काम करो कैल्विन, I'll tell you what. ये zip files delete कर दो. Delete all the zip files. Delete all the zip files. हाँ, I think you are doing correct only. One by one. API को zip करो, contact को zip करो, e-server को zip करो, user service को zip करके 4 zip files दे दो. I suppose आप वही कर रहे थे. Okay. Yes. Okay. So guys, first of all, I would like to thank Calvin for being my co-facilitator for the day. Thank you so much, Calvin, and everybody else. Shall we thank Calvin once? We should thank Calvin, isn't it? Before Calvin sends all the code. Yeah, I think we should thank Calvin. Thank you, Calvin, so much for helping us out. Yeah, put all the codes. This will be available to you in the group. If you have not joined the group, please join the group because there are many things that are going to come up. Now, what I'm going to do here, guys, is let me just give you a quick recap of everything. Acha, one of my friend here is asking, sir, when are we going to do offline? We'll try to catch up with an offline program also very soon. But guys, understand, offline program arrange cannot be done so fast the way online program can be done. Right? There's a lot of logistic that needs to be taken care of. Right? And most of the time, what happens is I am very busy with many other programs.
today I trained Accenture, right? Morning I was training employees of Accenture. I was busy there. So if you ask, sir, today can you train Accenture and also at the same time come to the college, that's not going to be possible. But I will try to catch your guys, right? At least once or twice. I'll come to your college and I'll meet you. Hmm? But these special training programs will mostly be online, simply because it's very difficult to travel down this frequently. Okay, can I do a short recap of what we just did? Is my screen visible? Yeah, is my screen visible? The code is already given to you guys. Let me summarize everything. भाई क्या हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, क्या हुआ? First of all, don't worry, the recordings are available. Okay, the code is available step by step. You can perform this on your own if you were a little bit behind. But if Calvin can do it, everybody can do it. It requires little bit of knowledge of Java and Spring Boot. If you have no idea about Java and Spring Boot, but this project looks amazing and you created this project, so this is where you start from scratch. अब तक कुछ नहीं किया है, नहीं आता है प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, देख लो कितनी मस्त चीज है भाई. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. आज से शुरू करो यार. आज से you start learning these things. It's very easy and it can actually help you start a career at a very great position rather than starting the career at 3 lakh 4 lakh rupees per annum. Start at 12 lakh 15 lakh rupees per annum, right? Maybe by age of 40 you'll retire it, but it will not come by default. ये भी समझो, अपने आप नहीं आएगा, कोई दे दे. ये सब चीजें, लेटेस्ट इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्टली. इंडस्ट्री के हिसाब से यू बिकम रेडी. Okay, you cannot ignore industry and then say I want to earn money, I want to do a business. Industry जो मांग रही है उसके हिसाब से करना पड़ेगा. So what we did here was we implemented this beautiful architecture. Give me 10 seconds, let me fetch my digital pen. Okay, so what we did here was I created a user service. Give me 10 seconds, guys. Then 10 more seconds. We'll close this in next 10 minutes, guys. Don't worry. It's all done. I'll just do a quick recap. We'll share attendance sheet and then we are all done. Allow me 30 seconds more, please. Additional 30 seconds. I'll just fetch my pen. All right. Can you see the text on the screen? Are you able to see it? Are you able to see? Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much, guys.
Let me also turn on the camera. Yes. Okay. So this is the architecture that we have implemented, right? Microservice 1, 2, 3, and it goes n number of microservices. एक बड़ा application नहीं बनाना है, छोटे छोटे बहुत सारे applications बनाने हैं, right? Gives you the flexibility of technology, also helps you to scale the application, right? तो हमने user बनाया. User was on port number 8001. Then we also made contact. We made a contact. Okay, this is what we did. Contact. Contact was on port number 8002. Completely independent softwares, independent database, independent programming language. हमने दोनों का एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, बट यू कैन यूज एनी डैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ओके, विद अ कंट्रोलर, ये हमने सेट किया. Then we did some changes. We used something called as REST template. That's how application talk to each other on servers. तो ये करने की वजह से क्या हुआ, REST template हमने यूज किया. This application was able to talk to this application. How? यहाँ के कंट्रोलर से यहाँ के कंट्रोलर को हमने कम्युनिकेट किया. डन. क्लाइंट 8001 पे करके यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा था, and it was also able to communicate here by going to port number 802, localhost port number 8002. We had set up a route which says slash user करोगे और slash id डालोगे तो ही यहाँ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे slash contact slash user then id करोगे तो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है? ये हमने इम्प्लीमेंट किया. Next what we did was we added all of these things in a Eruca Netflix server. Name of this is Eruca Netflix server. By default it runs on port 8761. सर्विस डिस्कवरी का काम यही है, किधर क्या सर्विसेज चल रही है उसको रजिस्टर करना. It has got something called as service registry. Any server that it founds, any microservice that it founds that is running, ये automatically उसको register करता है. And many of the times it automatically registered itself also, for which we have done 2 line of change. Do not register yourself, right? हमने वो false कर दिया, तो इसने इन दोनों सर्विसेज को रजिस्टर कर दिया. Now the problem with this architecture was, जो हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, that यार ये यूजर डायरेक्टली 8001 पे जा रहा है, डायरेक्टली 8002 पे जा रहा है. पहले तो ऐसे यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते कभी भी माइक्रो सर्विसेज को. ओके, सिक्योरिटी थ्रेट. Secondly, this is 2 services. Imagine tomorrow we have 10,000 services. तो यूजर के 10,000 सर्विसेज को याद रखेगा? नहीं रखेगा. That's why we need a single entry point and exit point called as API gateway, application programming interface. UPI is a type of an API gateway. Paytm is type of an API gateway, जो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट लेता है, बैंक से कम्युनिकेट करता है, प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट लाके देता है, ट्रांजेक्शन पास और फेल. हमने एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की. Now we created an API gateway which was running on a server 8003, और हमने बोला कि भाई क्लाइंट 8003 के ऊपर आप स्लैश यूजर या स्लैश कॉन्टैक्ट करके रिक्वेस्ट कर सकते. नो नीड टू गो हियर. So what was the architecture that we implemented? Have a look. This was the architecture that we implemented. The architecture was, number one, this is my client. That means your browser. Okay. This is my API gateway. API gateway. This was my user service running on port 8001. This was my contact service running on port 8002.
2. My API server was running on port 8003, and this is my service discovery, which was my Eruca server, which has a by default port number 8761. Done. First, at the very beginning of everything, the client was connecting to user directly, contact directly. This was my first project. Then we made some changes to the controller, and my user was able to communicate with the contacts microservice. This was the second thing. Then we included this under Eruca microservice, right? You know, Eruca discovery. Then we implemented API gateway. After implementing API gateway, what we'll do here is, though this exists, या हम अभी भी डायरेक्टली कर सकते हैं, पर हम क्लाइंट को बताएंगे नहीं ना, हम यूजर को नहीं बताते ये चीज, डेवलपर को पता रह सकता है, वो भी सिर्फ इस डेवलपर को पता होगा मेरा एप्लीकेशन कहाँ पे, कॉन्टैक्ट सर्विस के डेवलपर को पता ही नहीं होगा मैं कहाँ पे, यूजर कहाँ पे. सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, सपोज फेसबुक में कोई काम कर रहा है तो उसको अपना प्रोजेक्ट छोड़ के बाकी कुछ नहीं पता चलेगा कहाँ चल रहा है, किस सर्वर पे चल रहा है. So ये तो रही है, but what we did was we created API gateway. So the user will always give request to this. So what happened was we did some changes, right? So let's study the changes that we did. Remove this. Oops. Okay. Now last change that we did today was send me the request to API gateway at port 8003. API gateway में we had set up the routes. Routes की वजह से it goes here or it goes here. By default this is communicating here. अब यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आए वो रिक्वेस्ट लेकर के ये इसको दे देगा. आई हैव नॉट सेट अप एनी ऑथेंटिकेशन, बट एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट लेने से पहले आई कैन चेक लॉगिन डिटेल व्हिच वी हैव नॉट डन, है ना. यूजर ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हैं अगर चाहिए रहेगा तो. डन. दिस इज द सिंपल आर्किटेक्चर दैट वी हैव सेट अप. स्क्रीनशॉट टेकन. डन. आर वी क्लियर what we have done at a coding level. हमने यूजर बनाया, यूजर सर्विस पैकेज डॉट कॉम डॉट यूजर. डिपेंडेंसीज में हमने ऐड किया वेब एप्लीकेशन. We did not add, but now since you are aware you can add client directly now. अब आपको क्लाइंट डिस्कवरी सब समझ में आया, क्लाइंट डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट इसके पहले सर्वर बनाना पड़ेगा. आप ऐड कर सकते हो. okay. यहाँ पे I created entity. I created 3 packages: entity, controller and service package. इसमें क्लास रहेगा, इसमें मेरे कंट्रोलर सेट होगा, यूआरएल सेट करूंगा मैं, और यहाँ पे मेरी एक्चुअल सर्विसेज रहेगी. तो आई क्रिएटेड दैट हियर. फर्स्ट एंटिटी, user class, contact class. The code is already with you. User with user ID, mobile number, maybe phone number. 3 चीज हमने डाली. Then I created contact. After this, I created service. Service में I created an interface. Then I created an implementation class. फिर मैंने एक implementation class create किया, right? User, interface and implementation class. Then फिर I have set up a controller. Controller में I had set up कि ये कैसे कनेक्ट करेगा कॉन्टैक्ट सर्विस. कंट्रोलर सेट किया मैंने, राइट. यहाँ पे मैंने पाथ वेरिएबल गेट मैपिंग यूज किया, स्लैश यूजर करके ही जाएगा विद यूजर आईडी. यूजर सर्विस फर्स्ट थिंग आई डिड.
Similarly, I created contact service. After creating contact service, I created my Eruka server. Eruka server create करने के बाद इसमें मैंने 2-3 सेटिंग्स चेंज की बस. That my dear Eruka server, please do not register yourself. बस Eruka server में कुछ और करने का जरूरत नहीं था. Thereafter, my user and my contacts were just a web application because मैंने starting में ना ये ऐड ही नहीं किया था. ये वाला मैंने ये ऐड ही नहीं किया था क्योंकि मेरा सर्वर था ही नहीं ना, तो मैं क्लाइंट पहले से कैसे ऐड करूं. Next time when you become smart, create a server first. Okay, now that you know the architecture, पहला काम करना सर्वर बना दो और फिर डायरेक्टली क्लाइंट ऐड कर दो, तो your step will become easier. I created contact in the same way. Here I had entity में contact class. ये रहा contact class के 2-4 चीजें हैं. कंस्ट्रक्टर सेट किए विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, गेटर सेटर सेट किया. इंटरफेस बनाया मैंने, स्टेप नंबर 2. ये रहा इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लिखा मैंने. और ये रहा मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास. ये रहा, एक फिल्टर लगाया था मैंने, इसी यूजर आईडी का यूजर आईडी आएगा. डन. देन मैंने pom.xml में जाकर के इसमें डिपेंडेंसीज ऐड की थी सो दैट दिस बिकम्स अ क्लाइंट. तो हमने 3 जगह पे कोड कॉपी पेस्ट किया था pom.xml सो दैट दिस बिकम्स Eruka क्लाइंट. राइट. कहाँ एक ये ऐड किया लाइन नंबर 18, एक ये ऐड किया नेटफ्लिक्स Eruka क्लाइंट. राइट. और इसकी डिपेंडेंसी ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया. डन. आफ्टर दैट वी क्रिएटेड API गेटवे. API गेटवे बनाते टाइम हमने बाय डिफॉल्ट, जब हमने ये बनाया था तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या किया था, यहाँ पे डिस्कवरी क्लाइंट करके सेलेक्ट कर लिया था पहले से. राइट. वी डिड अ शॉर्टकट. नाउ हियर वी क्रिएटेड एन application.yml and we had set up a simple route. हर एप्लीकेशन का नाम हमने सेट किया है लाइक दिस. हर एप्लीकेशन का होस्ट नेम वी हैव सेट अप. Every application run on a different individual port numbers. In this route I am setting /user आएगा तो यूजर सर्विस पे जाना चाहिए, /contact आया तो कॉन्टैक्ट सर्विस पे जाना चाहिए. ये रीडायरेक्टिंग या ट्रैफिक मॉनिटरिंग का काम यहाँ पे मैंने कर दिया. Another important thing that we did was we added something called as load balancer. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक लाइन का कोड saves life. Load balancer manages the load on any kind of microservice. किसके ऊपर लोड आ रहा है वो मैनेज कर लेता है उस चीज को. Right. Now these all technologies is something that you really need to study in detail to become an expert. Now this is how we build up a microservice. अगर मुझे अब इसको Flipkart बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? I just need 5 to 6 teams. 5 to 6 teams. Each team member will have 3 to 4 people. Each team will get a responsibility of individual services. तुमको बोलूंगा डील ऑफ द डे, इस टीम को बोलूंगा तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखो, इसको बोलूंगा तुम कार्ट मैनेजमेंट देखो. एक ही टाइम पे अलग अलग टीम अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट काम कर रही है. एंड देन दीज प्रोजेक्ट विल बिकम अ बिग प्रोजेक्ट इन नो टाइम. यूजर सर्विस नहीं रन हो रही है, कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या मेरी कॉन्टैक्ट सर्विस नहीं चलेगी? या गाइस, क्विक फीडबैक. विल माय कॉन्टैक्ट सर्विस नॉट वर्क? इट विल वर्क because it's an independent service, right? So एक सर्विस बंद हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. Tomorrow one team is working on updating contact service. You can quietly update it. Rest everything will have no effect whatsoever. टेक्नोलॉजी चेंज करना है, हाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जावा में बना है सर, PHP में करना, हाँ कर दो भाई, क्या प्रॉब्लम. बाकी प्रोजेक्ट चलता रहेगा. Your Netflix will never stop working. Your Flipkart, your Amazon will never stop working. But you will see continuous updates. Now, cloud computing, this service is put on a different server. So these applications run very fast. सर ये प्रोजेक्ट को आगे और कैसे मैं अच्छा बना सकता हूँ? पहले तो और सर्विसेज ऐड करो. सेकेंडली, हमने इसमें UI नहीं डाला. Did we see we did not put any UI? यूजर इंटरफेस नहीं बनाया हमने, राइट? यूजर इंटरफेस डाल सकते हैं कि यूजर का डिटेल्स हम थ्रू ब्राउजर ले रहे हैं.
where we are able to add users. है ना ये you guys are good at add, update, delete. Am I right? Because every time I go to university, I ask what you have made, sir, add, update, delete. Sir, user add, update, delete. This yes. 90% of the project is add, update, delete. So you can add, update, delete. ठीक है वो तुम कर लो. ठीक है कैसे करोगे? HTML डालना होगा. HTML डालना होगा. एड अपडेट डिलीट कर लो एक डेटाबेस बना लो माई सीक्वल में एक डेटाबेस बना लो. नाउ हियर इज वेयर यू हैव टू एक्सप्लोर स्प्रिंग बूट में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, HTML कैसे ऐड करते हैं. ये बहुत बेसिक चीजें हैं which you can learn, or we are coming up with more training programs in detail, right? So I am planning to have a 30 hours of DevOps engineering training program. Okay, if you are interested, I'm sharing your form link. Please let me know I'm interested. Based on number of registration, we will propose it to the university and then we will work it out for you guys. If I do not get enough number of registration, then I can't propose it. मैं बोल ही नहीं सकता मैडम दो बच्चे आ रहे हैं. हाँ तो फिर दो बच्चे के लिए थोड़ी ना इतना मेहनत करेंगे. If you are participating, we'll come up with a certificate program for you where we'll take these things into detail. Okay, full stack developer भी आएगा धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे. Existing में what all things are coming, people are not participating. How do I come up with more programs? Okay, but if you participate, guys, I will come up with more and more programs. This will become a continuous activity. Trust me, कुछ नहीं चाहिए यहीं से रेडी करके भेज देंगे तुमको. ठीक है. If you have a target, if you really want to kickstart a career, I'm there to help you out as a KC alumnus, right? But my only challenge here is people should come up and participate. People should take interest, and people should apply for these training programs that we are doing it. ऐसा नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तुम आना है तो आओ, तुम नहीं आना है तो मत आओ. बिकॉज लॉट ऑफ लॉजिस्टिक, टाइम, मनी, so many things are involved in this, guys. Your participation is the most important. But we'll try to reach out to you with more and more programs, right? 99% these programs are free of cost for you. So what's the problem? Something which is a very high value programs where we will have to invite external trainers all. So certificate registration ka there will be some charges which you have to pay, right? क्योंकि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का GST PST बहुत कुछ लगता है, वो चार्जेस रहेंगे, नॉर्मल चार्जेस है. Otherwise later on you will end up spending lakhs of rupees into going to some of the companies who market a lot of programs to you. यहाँ घर बैठे बैठे मिल रहा है दोस्त. Okay, please do it. Most of all we will see how the entire university students are getting interested. If you are interested, more programs will come. For now, this is it. Upcoming programs are Scrum training. If you have not registered, please register it. Upcoming training programs may be DevOps, where this will go into detail. Full stack development also will put up. Okay, but remember, full stack development is a training program which goes 100 to 200 hours. It cannot be done in 4, 5, 10 hours. 100, 200 hours ka training program. So I want people who are committed. So we will get you, if not me, I'll get you industry experts. Okay, कोई 10 years, 15 years industry expert मैं लेके आऊंगा who will guide you like this, one to one. Okay, but you have to register, that is important. Okay, along with this, any other training program? Yes, we had an advanced data science program with Excel. You can register for that also, right? That is also there. We had postponed that because of poor participation. Okay, so many programs will come, but your participation is not important. Okay, this is done and set. What I'm gonna do here is all the code, required material, I will push it onto your group. Okay, feedback form is coming up. Please fill the feedback form also. Okay, allow me 10 seconds to give you a feedback form. Feedback form, honestly, whatever your feedback is, you can, I will opposite put forward. Just give me a second. Today's attendance and feedback form, it's coming up your way in 10, 9,
8. Yeah. Copied, pasted. Okay. In this feedback form, you can also mention if you are looking forward for any other training programs. We will try to formulate it, get out some time, and make the trainings for you. For MSc, we'll have special trainings, right? I recognize this is my MSc crowd. Am I right? We have many advanced training programs coming up in the future. Any doubt, guys? Shall we close the session? Any doubts? No? Then shall we close the session for the day? All right. Thank you so much. This is your trainer coach, Professor Ajit Vishwakarma. My dear friend, we have been into a journey where you have tried to understand how to implement microservice from absolutely scratch. We have used Spring Boot in order to implement a microservice architecture. In the microservice architecture, we have client, we have API gateway, we have got various different microservices. We also got service discovery. Service discovery has got service registry. Now, what we have done here is using microservice boot application, which is Spring Boot. We have created a Maven type of a project, and in the Maven type of project, we have used certain dependencies. Dependency number one, web application. Dependency number two, we have Eruka server, we have Eruka client, we have gateway. These all dependencies we have used for creating our application. Now what we did here was we created a simple user application. User application had certain fields. We created MVC architecture using entity controller, and at the same time we have service. We have created an interface and implemented it. Once my user service was all said and done, I created a contact service. After my contact service was done, I implemented an Eruka server. Once my Eruka server was done, I created an API gateway. API gateway, my dear friend, is a single entry point and a single exit point microservice. Such a wonderful thing. This is how the big giants like Netflix, Amazon, Flipkart, etc. are actually working, and this is how their big applications are built. This gives you the flexibility of creating high quality software in less time, less cost, less team, and no matter how many new features you want, or I want to just retire an old feature, I can do it very easily without the user coming to know. Microservice is also a part of DevOps, my dear friend, because each microservice is hosted on different servers. That is why these apps work with very slow internet connectivity also very easily. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed this session. Please fill the feedback form. I'll see you again very soon. Bye bye. Take care.